So yeah, hi everyone. We'll be starting with the meet today and our session. So this would be our last day for the boot camp, and today we are having two like basic topics, or you could say the topics that are from the linear data structure or non-linear data structure. Sorry. So far we have covered with the linear data structure and also some fundamentals. So if you have any doubts, you can ask now in the chat box or something. Otherwise, we'll be starting with the nonlinear data structure and we'll be covering with the trees. That's an important topic that we need to cover because on that topic, there are so many questions that are being asked in the interviews. So after that, we'll be seeing the DFS and BFS algorithms and how they are work because of second year and third year people as they like study and they have this in their curriculum. Yeah, Chaitanya, do you have any doubt? Hello, Chaitanya Udan. You can open your mic, Chaitanya. Yeah, I guess not. Well, Okay. yeah. So after that, we'll be declaring the results of this boot camp, the top three contestants. So yeah, so I will be starting with this session today. If anyone has to join, should join now. अगर तुम्हारे कोई दोस्त वगैरह हो तो उनको बुला लो. And yeah, our daily ritual सब हाई करके डाल दो चैट पे as if you are present here. वही तुम्हारी प्रेजेंट ही करके ले ले सकते हैं. या एवरीवन जो भी मीट में है और सीख रहे हैं यहाँ पे आके खाली ज्वाइन करके नहीं छोड़ा ना. Yeah, obviously, but our daily ritual. So let's hi everyone. And are you ready for like today's session? So that's why up and ready. Okay. So yeah, hi everyone. We'll be starting with the today's session. So the first topic to be covered today is from the nonlinear data structure, and that is going to be taken by Mohit, as you know, many of you know him. So yeah, Mohit, take over from here. Okay, my bad. Sorry. So, good evening, all. Let's start with the day 7 of the DSA camp. I think day 7 ही है. इतने सारे days हो गए याद भी नहीं है. So, good evening, all. Let's start with the today's topic. कल तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए वो सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते थे, राइट? दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स को और क्लासिफाई किया गया था, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर. तो कल तक के जितने भी टॉपिक्स थे वो सब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते थे. आज से हमारे नॉन लीनियर वाले टॉपिक्स शुरू होंगे जिसमें काफी कम टॉपिक्स है, लाइक ट्रीज है एंड ग्राफ भी होता है, बट आई गेस ग्राफ्स हमने इस बूट कैम्प में कवर नहीं किया. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रीज. सो जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड. आई विल डू द थिंग. Okay, so is my screen visible to all? Any Yeah, one of you can tell me. yeah, it's So yes, we'll start with the today's topic. So yeah, I think introduction is enough for me. मैंने Google का cloud का पूरा camp लिया था, and before that मैंने algorithmic complexities का भी एक topic लिया है just right now in this DSA का boot camp. So we'll start with the today's topic, which is trees. So अभी तक like हम लोगों ने काफी चीजें देख ली, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स देख लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हमने बेसिक से टॉपिक्स देख लिए थे, एंड अदर देन दैट हमने एरेज देख लिए थे, like searching, sorting, linked list, stacks, skew, all we have seen the entire linear data structures. So what's next? Obviously it's my topic, trees. So basically non-linear का ये first topic है, and
ओवरव्यू, आज का ओवरव्यू बहुत इजी है, लाइक काफी छोटा सा टॉपिक है, लाइक आई ट्राई टू कवर इट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि काफी लेंथी हो जाता है तो फिर लास्ट तक एनर्जी नहीं रहती क्विज तक, काफी बच्चे गायब हो जाते हैं, स्टार्टिंग में 45 रहते हैं, बाद में 35 हो जाते हैं, फिर 20 उसमें से क्विज सिर्फ 20 लोग देते हैं। सो छोटा सा फटाफट कवर करते हैं। स्टार्टिंग में देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रीज, और ट्री जो डेटा स्ट्रक्चर है उसकी जरूरत क्या है, क्योंकि अभी तक डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े जा रहे हैं भाई, लिंक हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक, क्यू, एरे, जरूरत क्या है इन सबकी, ठीक है। अभी तक तो समझ गए कि इसका डेटा सॉर्टिंग, डेटा वो जो सॉर्ट किया डेटा, हाउ टू यूज इट, इम्प्लीमेंट इट, इंसर्ट, रिमूव, इंसर्ट करना, डिलीट करना, ये सारे ऑपरेशन हम उन डेटा स्ट्रक्चर्स पे लगाते हैं। सो उन सबका इस्तेमाल इन डेटा स्ट्रक्चर्स किया जाता है, बट एग्जैक्टली ट्री का क्या नीड है, एंड ये बाकी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को कैसे मात देता है या फिर उनसे एक स्टेप अहेड है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, बाइनरी, बीएसटी एंड एवीएल। इट इज अ काइंड ऑफ वेन डायग्राम फॉर बाइनरी, बीएसटी एंड एवीएल, मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड सिंटैक्स यूज फॉर ऑपरेशन ऑन ट्रीज, ठीक है। मैं सारे कोड्स एंड सिंटैक्सेस नहीं लूंगा, मैं तुम लोगों को सिर्फ इंसर्शन ऑफ एंड की, ठीक है, इसमें की कंसेप्ट होता है, इंसर्शन ऑफ अ नंबर और की इनटू अ ट्री, कि कैसे हम एक नंबर और या फिर की इंसर्ट करते हैं इनटू अ ट्री। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नीड फॉर ट्री डेटा स्ट्रक्चर, जरूरत क्या है। One reason is to use tree might be because you want to store information that naturally forms an hierarchy. अब तुम लोग ये जो वर्ड है ना हायरार्की, तुम ये वर्ड काफी बार सुनोगे आगे तुम्हारे डीएस में एंड ऊप्स में, कि क्या होता है हायरार्की। लाइक अगर इसको हम लोग अपना हमारे बेसिक ग्रामेटिकल से कनेक्ट करें तो हायरार्की इज लाइक हेरिडिटरी, कि उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक मतलब एक इंफॉर्मेशनल, एक मतलब एक मीनिंगफुल सीक्वेंस या फिर एक दूसरे से कनेक्शन होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट, कि जब एक लाइक एक पैकेट ऑफ डेटा या फिर समझ लो एक स्टोरेज ऑफ डेटा है जिनका एक दूसरे से समथिंग रिलेशन है, जब हम उन्हें प्रॉपरली अरेंज करते हैं, ठीक है, तो उस अरेंजमेंट को अरेंज करने के लिए, बेसिकली उस डेटा को अरेंज करने के लिए हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। एंड उसके काफी सारे रीजन है कि हम एग्जैक्टली ट्री ही क्यों यूज करते हैं। विल सी फॉरवर्ड, तुम लोगों को धीरे धीरे वो समझ में भी आएगा लॉजिक, व्हाई वी यूज एग्जैक्टली ट्री टू फॉर्म दैट रिलेशन। ट्री प्रोवाइड्स मॉडरेट एक्सेस सर्च, ठीक है। अब इसमें मॉडरेट क्यों बोला गया है, क्योंकि वो एरेस, मतलब सबसे पहले बात तो एक्सेस या फिर सर्च, उसको ढूंढने में या फिर वो डेटा एक्सेस करने में हमें ट्री काफी अच्छा ओवरहैंड देता है। बट जैसे यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि क्विकर देन लिंक लिस्ट बट स्लोअर देन एरेस, ठीक है। जो ट्री जो डेटा स्ट्रक्चर है वो हमें डेटा ऑब्वियसली एरे से स्लो एक्सेस करने में हेल्प करता है लिंक लिस्ट से ज्यादा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिर ट्रीज यूज क्यों करते हैं, कि जबकि वो एरे से स्लो है, क्योंकि एरेज एक कंटिजियस मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर एज यू नो, एंड देयर आर सम नॉन कंटिजियस लाइक मेमोरी स्टोरेज आल्सो, जहां पे हमें डेटा स्ट्रक्चर्स लगाना पड़ता है एंड वी हैव टू सॉर्ट डेटा, बेसिकली यूज जहां पे हमें डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई करना पड़ता है, वहां पे ट्री यूज होता है, राइट। क्योंकि अगर नॉन कंटिजियस डेटा है वहां पे अगर हम लिंक लिस्ट लगाएंगे, बट उससे उससे फास्टर वे है हमारे पास लाइक ट्रीज, राइट। तो ऑब्वियसली ट्री वहां पे एक ओवरहैंड मिलता है। ट्रीज प्रोवाइड मॉडरेट इंसर्शन एंड डिलीशन, सेम अगेन लाइक दैट, बट इंसर्शन एंड डिलीशन में उल्टा है, ठीक है। वो सेम है, लाइक कि एरेस में वो क्विकर होता है एंड लिंक लिस्ट में वो अनऑर्डर्ड के लिए स्लो होता है, ऑर्डर्ड के लिए वो शायद एरेस से फिर से क्लोज होता है कि एरेस की तरह वो फटाफट करे। Also, like linked list and unlike arrays, trees don't have an upper limit on the number of nodes as nodes are linked to the using pointers. बाप रे, काफी बड़ा स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले नोड्स में, एरेज में तो नोड्स पता है सबको, जिसमें डेटा एंड एड्रेस ऑब्वियसली एक स्टोर होता है, द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड एड्रेस इज नोन एज नोड। लाइक लिंक लिस्ट एंड अनलाइक लाइक लिंक लिस्ट एंड एरेज like linked list and unlike arrays, trees don't have an upper limit on the number of nodes. ट्री है, देख सकते हो ना, ट्री में ब्रांचेस एंड लीव्स आर, मतलब उनकी कोई काउंट नहीं होती है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ एंड न्यूमरस नंबर ऑफ लीव्स एंड ट्रीज आर नोन, लीव्स एंड ब्रांचेस आर नोन एज ट्री। तो उस वजह से जैसे लिंक लिस्ट में अगर हम जो उसमें जो नोड्स होते हैं उसकी नंबर बहुत बढ़ा देंगे, एरेज में भी जो भी नोड्स होते हैं उनका नंबर हम बहुत बढ़ा देंगे, तो वो एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा, बट वो चीज ट्रीज में नहीं है। इसीलिए ट्रीज को नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में लिया गया है, क्योंकि लीनियरिटी में जो डिस्टेंस होता है वो मैटर करता है, ठीक है, एंड नॉन लीनियरिटी में डिस्टेंस मैटर उतना नहीं करता है, ठीक है। Okay, so these are the few points which are considered when we talk about a non-linear data structure, कि वो
क्यू यूज किया गया है, एंड डेटा स्ट्रक्चर ट्री डेटा स्ट्रक्चर बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में क्यू एक कहीं ना कहाँ या क्यू एक अपर हैंड देता है. So let's start with the main topic. What are trees in data structure? It is a non-linear data structure which represents a relationship between nodes. What are the nodes? Nodes are basically a packet of information, okay, which we have to connect with each other. As I told you, hierarchically जब हम लोगों को डेटा मतलब लिंक करना होता है, स्टोर करना होता है या सॉर्ट करना होता है, तब हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, राइट? So these nodes are the packet of that information. This data structure is specialized method to organize or store data in computer to be used more effectively. Obviously, data structure का main इस्तेमाल तो यही है. And tree, when it comes to the more precisely say, I think non-contiguous memory के regarding में tree data structure को एक upper hand होता है. So this data structure is used for specially to organize, store and data to be computer to be used more effectively. And yeah, next it comes to the terms related to tree. ओके, ये जो नीचे इतना बड़ा ग्राफ दिख रहा है ना, लाइक डायग्राम, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइक तुम्हें एक आगे जाके पर्सपेक्टिव देगा कि आगे जाके जो टर्म्स आएंगे, पैरेंट नोड, चाइल्ड नोड, रूट नोड, फिर डेप्थ ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, वो क्या है. ठीक है, इजी. हेलो, इज देयर एनी डाउट? No, Mohit. I don't think. And या also, wait. When you are presenting, no, your like camera is not visible there. Okay, I think you forgot. Yeah, that setting I forgot it, so let it be, no problem. I think मैं मेरा कैमरा यहाँ शुरू कर देता हूँ. Yeah, fine. Whether you want to or not. Yeah. So हाँ, अभी तक कोई डाउट वाला टॉपिक था नहीं, इसके आगे देखते हैं, फिर आ सकता है. So easily, what is a parent node? A node which is predecessor of a node is called as parent node. ठीक है, लाइक किसी चीज का जो लाइक प्रीवियस स्टेप होगा वो उसका पैरेंट नोड होगा. यहाँ पे अगर हम इसको कंपैरिजन वाइज देखें तो यहाँ पे ये जो ऑरेंज ट्री देख सकते हो, तो यहाँ पे पैरेंट नोड होगा बी, क्योंकि बी, अरे बहुत है इजी, जैसे फैमिली ट्री होता है ना, इसलिए ये भी वही है. जस्ट फैमिली ट्री में से फैमिली हटा दो तो वो जो बचा हुआ ट्री वो तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर बन गया. ओके, सो व्हेन इट लाइक अगर हम इस पर्टिकुलरली इन 3 नोड्स को कंसिडर करें, डी बी ई, सो यहाँ पे बी जो है इट बिकम्स योर पैरेंट नोड, एंड डी एंड ई तुम्हारे उसके सिबलिंग्स, लाइक डी और बी उसके सन एंड डॉटर हो जाते हैं, बेसिकली चाइल्ड नोड. वेयर इट कम्स टू द हमारा नेक्स्ट टर्म which is child node. The node which is an immediate successor of a node is called as child node of that node. Okay, example D E are child node of B. Simple, दो टर्म्स उतने से ट्राइंगल से हो गए. ये तो बिल्कुल बताने वाली चीज ही नहीं है सर, जस्ट डायग्राम पिक्चराइज करो, स्टेटमेंट पढ़ो, टर्म्स क्लियर हो जाएगी. बट ये टर्म्स इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आगे सेकंड टर्म्स में कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि पैरेंट नोड, रूट नोड, थोड़ा सा पैनिक सा हो जाता है. सो रूट नोड, the topmost node of a tree or the node which does not have any parent node is called as root node. अब ये जो topmost node दिख रहा है आप लोगों को, root A, right, जो हाँ, so मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया था की, जो ये exactly जो पैकेट होता है उसको नोड बोलते हैं. लाइक जो सर्कल, मोर प्रिसाइसली बोलो, जो व्हाट इज द सर्कल, इट इज आवर नोड, एंड व्हाट इज कंटेन्ड इन इट इज नोन एज आवर की. ओके, सो की एंड नोड में कंफ्यूज मत होना, आगे जाके हम चीजें यूज करने वाले ये टर्म्स, दैट्स व्हाई आई क्लियर्ड इट अप राइट नाउ. सो हमारा रूट नोड हो जाएगा ए. ओके, क्योंकि इसके ऊपर इसका कोई भी पैरेंट नोड नहीं है, यही जो चीज है ये हमारी मेन, बेसिकली यहाँ से इसकी पुश्ते शुरू हुई है, दैट्स व्हाई उसका नाम है रूट नोड. ओके, थोड़े से और टर्म्स है, मैंने इसमें बहुत सारे टर्म्स है, बट दीज टर्म्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई ये कवर किए. फिर आगे जाके और जैसे जैसे टर्म्स आते रहेंगे, क्विक इंट्रो देके उनका चालू कर देंगे, व्हाट इज देयर यूज. ओके, देन इट कम्स टू द लीफ नोड और एक्सटर्नल नोड. द नोड which do not have any child node are called leaf node. Okay, ये बिल्कुल मतलब आखिरी पीढ़ी, मतलब अभी जो ऑनगोइंग चल रहा है उसके आगे कुछ नहीं है, दे आर नोन एज लीफ नोड. जैसे ये डायग्राम में देख सकते के एल एम एन ओ पी, इनके आगे कोई इनका लाइक चाइल्ड नोड नहीं है. ठीक है, इन सब के ऑब्वियसली पैरेंट नोड एग्जिस्ट करते हैं, इनका एच है, के और आई का, एम एन आई का, एम और एन का आई है,
और पी का जे है, इनके पेरेंट नोड एग्जिस्ट करते हैं, बट इनके लाइक इजी, आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट सो डीपली. ओके, so these are known as leaf nodes. Level of node, this is an important point somewhere around, कि लेवल ऑफ नोड क्या होता है. जो ये बेसिकली जो पेरेंट नोड है, सॉरी रूट नोड है, रूट नोड हमारा 0th लेवल पे शुरू होता है, क्योंकि वहां से हमारी ट्री शुरू हुई है, राइट, वहां से हमारी फैमिली शुरू हुई है, दैट्स व्हाई इट्स लेवल 0. वहां से जो भी एक एक जनरेशन, बेसिकली जनरेशन को बोल सकते हैं कि इट्स आर लेवल ऑफ द नोड. इजी. तो जैसे बी और सी लेवल 1, डी ई जी एफ लेवल 2, एच आई जे लेवल 3, लेवल 4 पे के एल एम एन ओ पी. वाओ, so fluent. So the last and next point is subtree. Any node of a tree along with its descendant. जैसे रूट नोड हो गया, रूट नोड को लगे हुई जितनी भी चीज है, इसको पूरे को हम सब ट्री बोल सकते हैं, ठीक है. बट दिस ऑल्सो बिकम अ सब ट्री. ये पूरा एक सब ट्री है, सब ट्री के अंदर भी सब ट्री हो सकते हैं. सो सब ट्री ट्री कंटेन्स सब ट्री डू नॉट कंटेन्स ट्री. ओके, सो काफी वर्ड्स के साथ खिलवाड़ हो चुका है, बट दैट्स इट. जो ट्री के सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम सब ट्री बोलते हैं, दैट्स इट. ये जस्ट कुछ इजी टर्म्स रिलेटेड थी उससे. देन इट कम्स टू द मेन पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज. इनकी जरूरत क्या है? इनकी जरूरत इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आता है कॉम्प्लेक्सिटी का खेल. क्योंकि ओके, बिफोर कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड, आई थिंक कुछ डाउट्स होंगे, तो लेट अस क्लियर. एनी डाउट गाइस? जिस चैट बॉक्स में डाल दो या फिर डायरेक्टली माइक ओपन कर सकते हो, नो इश्यूज. ओके, स्मूथ. टू बी ऑनेस्ट, अभी तक के टॉपिक में डाउट वाली चीज फिर भी कोई नहीं थी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, ठीक है. 3 टाइप के ट्रीज है. पहला पढ़ते हैं बाइनरी ट्री. इसका यूज एज सच एप्लीकेशन वाइज उतना नहीं है, बट डेफिनेशन जान लो. तुम्हारे वाइवा में भी पूछते हैं कभी कभी, व्हाट इज बाइनरी ट्री, ड्रॉ करके दिखाओ. बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन. मतलब एक नोड को 2 चाइल्ड नोड होने ही चाहिए, वो उसका प्री रिक्विजिट है. देन इट बिकम्स अ बाइनरी ट्री. ओके, जैसे ए को बी एन सी है, बी को डी एन एफ है, सी को एफ एन जी है, सो इट बिकम्स अ बाइनरी ट्री. लीफ नोड को नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि वो लास्ट जनरेशन है, उसके पहले वालों को कंसिडर किया जाएगा कि हर पेरेंट नोड को मिनिमम 2 चाइल्ड नोड होने चाहिए. इजी. देन इट कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, बाइनरी सर्च ट्री. गाइस, इसके न्यूमेरिकल ना बहुत मस्त होते हैं, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छे होते हैं इसके न्यूमेरिकल्स. मतलब देते हैं कभी कभी वाइवा में सॉल्व करने के लिए, बट तुमको क्लास में भी दिए जाएंगे आई गेस. तो इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे होता है. हमें करने वाले न्यूमेरिकल सॉल्व, तो मैं अभी से बोल रहा हूँ, एक कॉपी एंड पेन अपना साथ में रख लो, क्योंकि जैसे आज हमारे लीड ने, नीलेश ने भी बोल दिया है कि रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले. तो आज के हो सकता है आज के क्वेश्चन आंसर, मतलब क्वेश्चन आंसरिंग में तुम लोगों का उसे मतलब तुम्हारे रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है. सो कंटिन्यूइंग टू द बाइनरी सर्च ट्री, इट इज ऑल्सो नोन एज BST. Binary search tree is a node-based binary tree data structure. The key of each internal node in a BST is greater than all the key in the left. Okay, subtree of that node and smaller. Just leave that definition. तुम लोग यहाँ देखो, definition खुद बना लोगे. Okay, तुम्हें न्यूमेरिकल ऐसा नंबर, सीरीज ऑफ नंबर दिया जाएगा अनऑर्डर्ड, ठीक है. तो जस्ट इमेजिन अ सीरीज जो 8 से चालू हो रही है, ठीक है. ऐसे नंबर्स दिए गए 8, तुमने उसको रूट नोड लिख लिया. ओके, 8 को तुमने रूट नोड लिख लिया, उसका नेक्स्ट नंबर है 3. अब तुम लोग 3 को चेक करोगे कि 3 तुम्हारा 8 से बड़ा है या छोटा है. ऑब्वियसली 3 8 से छोटा है, उसको तुम लेफ्ट साइड में लिख दोगे. नेक्स्ट नंबर तुम चेक करोगे, गेस करो, नेक्स्ट नंबर तुम्हारा 12 लिखा है. 12 तुम्हारा 8 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है. तुमने उसको 10, सॉरी, तुमने उसको 8 को 10 को 8 के राइट साइड में लिख लिया. जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग तुम लोग एक बाइनरी ट्री क्रिएट करोगे. ओके, सो यहाँ देख लो, जैसे 10 8 से बड़ा है, उसके राइट साइड में आया. 14 10 से बड़ा है, वो उसके राइट साइड में आया. देखो, जैसे तुमने 10 से 14 पे जंप किया, उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो उसको तुमको 14 का पीओवी रख के तुम्हें उसे पोजीशन देनी है. ओके, सो बेसिकली इसका जो भी न्यूमेरिकल होता है वो टोटली तुम्हारी सीरीज पर डिपेंड करेगा जो तुम लोगों को क्वेश्चन में दी है, ठीक है. तो एक न्यूमेरिकल लेके देखते हैं, उससे बहुत इजीली समझ जाएगा, ठीक है. उसका सॉल्यूशन भी तुम लोगों को लास्ट में दूंगा एंड उसका ट्राई करता है. ओके, सो
पहले हम लोग पहले हम लोग एक एवीएल ट्री का टॉपिक है, ठीक है। मैं इसको तुम लोगों को थोड़ा सा ऐसा, अरे बहुत इजी है, ठीक है। तो उनका ऐसा पिक्चराइज करो, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज। पहला कौन सा था? बाइनरी ट्री, ठीक है। बाइनरी ट्री में वो कंसेप्ट था कि एक नोड को दो, मतलब एक पैरेंट नोड को दो चाइल्ड नोड होने चाहिए, ठीक है। इट वाज द कंसेप्ट ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में क्या कंसेप्ट था? वो कंसेप्ट है ही कि एक चाइल्ड नोड, एक पैरेंट नोड को दो चाइल्ड नोड होने चाहिए, बट उसमें एक और कंसेप्ट है कि तुम्हारा जो पैरेंट नोड है उससे छोटी वैल्यू रही तो वो लेफ्ट साइड में आएगी, बड़ी वैल्यू रही तो वो राइट साइड में आएगी, राइट। देन इट कम्स, एवीएल कम्स अंडर बाइनरी सर्च ट्री। तो इट्स अ वेन डायग्राम की बाइनरी ट्री, उसके अंदर बाइनरी सर्च ट्री, उसके अंदर एवीएल ट्री, इट्स अ सब पार्ट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अ बाइनरी सर्च ट्री इज अ नोड बेस्ड बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर। द की ऑफ ईच इंटरनल नोड इन अ बाइनरी BST is greater than all the key in the left subtree of that node and smaller than, ठीक है। ये भी मत जाओ डेफिनेशन वाइज, आ जाओ थोड़ा ऐसे ट्राई करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली एवीएल क्यों यूज करता है? बाइनरी सर्च ट्री इनफ नहीं है क्या तुम्हारा डेटा सॉर्ट करने के लिए? नहीं है, क्योंकि जैसे हमने बाइनरी सर्च ट्री में देखा कि अगर हमारी सीक्वेंस प्रॉपरली, मतलब आंसर ओरिएंटेड नहीं रही, तो अगर बड़े बड़े नंबर मिलते गए तो हम बड़े नंबर को कंटिन्यूसली जो रूट नोड या फिर पैरेंट नोड है उसके लेफ्ट साइड में असाइन करते जाएंगे। तो जैसे तुम यहाँ देख सकते हो, थ्री, थ्री से बड़ा नंबर आया होगा तो उसने फोर उसके लेफ्ट साइड में असाइन कर दिया, फोर से फिर फोर के बाद जस्ट फाइव आया होगा तो उसने फोर को फाइव के बाद असाइन कर दिया, फिर सिक्स आया होगा तो सिक्स को उसने फाइव के बाद असाइन कर दिया। भाई ये तो सीडी बनते जा रही है, कहाँ तक जाएगी? ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जब ऐसा सिनारियो फॉर्म होता है ना, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो गड़बड़ हो जाती है, ट्री की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसको पूरा लाइक उसको O ऑफ n, एवरीबडी नोज दैट वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में O ऑफ n होती है लिनियरिटी में। तो वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली हमें अवॉइड करनी है। जब ये डेप्थ ऐसी बढ़ती जाएगी, ठीक है, ऑब्वियसली 3 4 5 6, भाई सीडी उतरते जा रहा है, ठीक है। तो जब लाइक इसे डेप्थ बढ़ती जाएगी, हाइट ऑफ द ट्री बढ़ती जाएगी, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी खराब होती है। दैट्स वाई एवीएल ट्री का, एवीएल जो है वो नाम ही वैसा है, उसका कोई फुल फॉर्म, बेसिकली उसका फुल फॉर्म तीन साइंटिस्ट के नाम से है, उसकी कोई जरूरत नहीं, कहीं नहीं पूछते। तो तीन साइंटिस्ट ने थोड़ा दिमाग लगाया और ये चीज की कि बाइनरी सर्च ट्री को उन्होंने और सिंप्लीफाई किया एंड दे फाउंड दैट कि इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कम हो सकती है। तो उस वजह से अब ये जो तुम देख रहे हो, ये वाला जो तुम्हारा डेटा मतलब ट्री है, इट्स योर बाइनरी सर्च ट्री, राइट। बट जब तुमने इस पे बैलेंसिंग लगाई, एवीएल ट्री इज नथिंग बट अ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री को तुमने बैलेंस किया तो दिस यू फॉर्म अ एवीएल ट्री। अब एवीएल ट्री कैसे बनाते हैं, ठीक है। एवीएल ट्री को बनाने के लिए जस्ट एक फॉर्मूला याद में रखना पड़ता है, इट्स ऑफ बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर कैसे निकालता है कि हाइट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ट्री and minus the height of the right hand side of the tree should be 1 0 या -1, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। अब वो कैसे देखते हैं? लेट अस कंसीडर ओवर हियर कि हम लोग अभी ये जो रूट नोड है 3, इसके पीओवी में बात करते हैं। अब इसके अगर हम दोनों साइड से उतरे, सॉरी इसमें रूट नोड को कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है, रूट नोड को एज इट इज रखा जाता है। इसके चाइल्ड नोड से शुरू करते हैं, चाइल्ड नोड 1 है, तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड में देखो डेप्थ हाइट क्या है, तुम लोग सिर्फ एक ही सीढ़ी उतरे तो योर हाइट बिकम ऑन द लेफ्ट साइड इज 1, एंड 1 के राइट साइड में उतरे तो तुम्हारी हाइट ऑफ द राइट साइड बिकम 1, सो 1 लेफ्ट हैंड साइड -1 राइट हैंड साइड बिकम 0। व्हाट आई टोल्ड यू, कौन सी तीन वैल्यू बताई थी मैंने बैलेंस फैक्टर की? 1 0 और -1। जब तुम्हारी वैल्यू इन तीनों में से कोई एक वैल्यू मैच करती है तो इसका मतलब तुम्हारा ट्री बैलेंस होते जा रहा है, ओके मतलब, या फिर बोल सकते हो कि तुमने जो भी सब ट्री का बैलेंस फैक्टर चेक किया इट्स परफेक्ट। तो तुम लोग देख सकते हो 1 0 और 2 ये यहाँ पे एज इट इज दिया गया है, ये देखो एज इट इज है, क्योंकि उतना जो सब ट्री का पार्ट है इट वाज बैलेंस्ड, उसको कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं थी। नाउ इट कम्स टू द अनदर पार्ट कि ट्री का जो रूट नोड का जो सेकंड नोड था, द सेकंड चाइल्ड नोड 4। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, ओके, 4 के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे मैं अभी कर्सर पॉइंट कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है। सो बेसिकली इसकी हाइट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड बिकम 0 एंड इसकी हाइट ऑफ द राइट हैंड साइड बिकम 1
टू, तो 0 - 2 इट बिकम्स -2। तो मैंने बैलेंस फैक्टर की 3 वैल्यू बताई थी, -2 उसमें से एक से भी मैच नहीं होता। इसका मतलब वी हैव टू मेक सम चेंजेस इन दीज 3 नोड्स सो दैट इनकी बैलेंसिंग प्रॉपरली हो जाए। ओके, सो एवियल ट्री इज जस्ट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। तो अब ये वाले पार्ट को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे? हम इस पार्ट को ऐसे बैलेंस करेंगे कि इसमें से हम एक ऐसा नोड पिक करते हैं जिसकी हाइट दोनों नोड से ऑलमोस्ट इक्वल हो। तो जैसे ये 3 नंबर में देखा जा सकता है, 5 ही एक ऐसी चीज है जो 4 को अपने लेफ्ट साइड में और राइट 6 को अपने राइट साइड में रखेगा। इससे वो ट्री बैलेंस आउट हो जाएगा। एंड हियर इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग। सिंपल। इससे तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच जाएगी। सो ये वाला एक पॉइंट याद रखना कि बाइनरी सर्च ट्री का एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ लॉग एन होता है। अब ये लॉग एन क्यों होता है? लॉग इन जो होता है इट ऑलवेज मतलब कम्स इनटू द कंसिडरेशन विद द हाइट ऑफ द ट्री। जितनी तुम्हारी हाइट होगी उतना बेसिकली वो लिखा जाता है। अब यहाँ पे लीनियरली हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है? जैसे यहाँ देख लो 3, 5, 4, मतलब इट्स लाइक अ zigzag ट्री, थोड़ा लाइक इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स थिंग। तो ट्री जब ऐसा लीनियरली होता है तब जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वी कैन से दैट कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी। तो इट्स अ वर्स्ट केस हो गया ना। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें ओ ऑफ लॉग एन या फिर उससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। सो इट कम्स इनटू द कंसिडरेशन कि एवियल ट्री क्यों बना आया गया था। सो यहाँ पे तीन तुम्हारे टाइप्स ऑफ ट्रीज खत्म होता है। एंड हाँ, ये बाइनरी सर्च ट्री पे एक न्यूमेरिकल oops, I think there's a problem in the PPT. I forgot to add a hold on. I forgot to add the question. मैं तुम लोगों को वो चैट बॉक्स में दे देता हूँ, तुम लोग ट्राई करो उसे सॉल्व करने का। ओके, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड गाइस, माय बैड। Okay, so my bad with the presentation. Like I forgot the question. I'm really sorry. So मैंने चैट बॉक्स में तुम लोगों को एक सीरीज दी है। मैं तुम लोगों को पिछला वाले बाइनरी ट्री का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? उसको देख लो 1 मिनट के लिए, फिर उसके बाद मैं हटा दूंगा। एंड उसको देख के तुम लोग इस प्रॉब्लम का बाइनरी सर्च ट्री बनाने का ट्राई करो। जस्ट होल्ड ऑन, आई एम प्रेजेंटिंग द स्क्रीन। परफेक्ट। सब लोग एक बार इस बाइनरी सर्च ट्री को देख लो। व्हाट आई टोल्ड यू, जो पहला नंबर दिया जाता है उसको तुम्हें रूट नोड लेना है। एंड बाद में जो तुमको जो नंबर तुमको जो सीरीज प्रोवाइड की गई है उसके अगले नंबर को देखो, बड़ा है छोटा है, प्लेस इट। उसके अगले नंबर को देखो, इन द पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा है छोटा है, देखो, प्लेस इट। लाइक ट्राई टू लाइक सॉल्व दैट न्यूमेरिकल। ओके,
लास्ट टाइम की तरह इसको सॉल्व करो एंड जस्ट अपलोड इट ऑन टू द ग्रुप जिसमें आप लोग ज्वाइन हो. यस, लास्ट टाइम की तरह. एंड वंस यू आर डन जिस चैट बॉक्स में डाल देना. होल्ड ऑन, मैं तुम लोगों के लिए एक चीज सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि मैं तुम लोगों को देख पाऊँ. या क्या हो रहा है? प्रेजेंट नहीं हो रही है. लेट इट बी, आई विल डू द एंटायर स्क्रीन. अब दिख रही है तुम लोगों को स्लाइड? जिसको माइक अनम्यूट करके बोल दो. हाँ. Sorry, it was by mistake. नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. Okay, Prapti have answered the question. ओके, मैं थोड़ा ये स्क्रीन शेयर बंद कर दूंगा क्योंकि वैसे रिलेट कर करके सॉल्व हो जाएगा वो. थोड़ा सा सोच के देखो, ग्राइंड योर माइंड. होते ही तुम लोग फटाक से ग्रुप में डाल दो. वी आर गोना वेट फॉर अ मोर 2-3 मिनट्स. एक ही न्यूमेरिकल है, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी देता हूँ. आराम से कर लो सॉल्व. Okay, so Mike. Nilesh. Which one? Text. Okay. Um, सानू, मैंने क्विज का कोलैबोरेटर भेजा है. ओके, एक बार चेक कर लेना या मैं ही होस्ट कर लूँ. जस्ट अभी भेजता हूँ. सो गाइस, 1 मोर मिनट, उसके बाद हम लोग फटाक से आगे प्रोसीड कर लेंगे. इजी था बाइनरी सर्च ट्री का, इसका ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था.
हाँ पक्का, मेरे पास सॉल्यूशन है, उस पे से हम उसका मतलब सॉल्यूशन का फोटो है ऑब्वियसली, उसका फटाक से देख लेंगे कि हाउ इट्स गोना वर्क। Anu, just check once. I have added you as a collaborator. Okay. Kanchan, Prapti, Shraddha, Gauri, Mayank, Shatuja. Okay, great response. Guys, नए नाम प्लीज हमें कानों पे आने दो। पुराने पुराने नाम लाइक जो पहले दिन से आंसर दे रहे वही आंसर हमें अभी भी मिलता है उन्हीं लोगों से। सो थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन बनाने का ट्राई करो। और सच्ची तुम लोगों के लिए कर रहे भाई, पता है लिटरली हम लोगों को कोई हवा नहीं थी थर्ड ईयर में आते तक कि ये सब चीजें करनी होती है। वो तो अभी हम लोगों को जीडीएस से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तुम लोगों तक पहुंचाने का ऑफिशियली चीजों को। दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू गेट टू यू दिस। सो या ट्राई करो यार थोड़ा सा इसमें, लाइक यू गेट मोस्ट आउट ऑफ इट। सो या आई थिंक इट्स इनफ, हम लोग प्रोसीड करते हैं क्योंकि एक और टॉपिक बचा है। तुम लोग मेरे टॉपिक से बोर ना हो जाओ। प्रणव नेक्स्ट होस्ट है, उसने भी मेहनत की है। सो entire screen like perfect. सो या ये उसका आंसर है। एक बार सब लोग अपने अपने इसमें लाइक चेक कर लो। आई एम गोना चेक इट टू। ओके, चेकिंग वेकिंग नहीं, सबके पास अपने अपने आंसर्स है। सो आई जस्ट कीप क्वेश्चन विथ मी। ओके, 38, 14 एंड 8। लेट्स स्टार्ट विद द 38। वो हमारा रूट नोड हो गया। 14 उससे छोटा है, उसके लेफ्ट साइड में आ गया। 8 14 से भी छोटा है, उसके कंसेक्यूटिवली 14 लेफ्ट में आ गया 8 के। ओके, देन इट कम्स नेक्स्ट नंबर इज 23 एंड 18। 23 सानो आई थिंक माइक चालू है। ओके, सो 23 38 और 23 को पहले रूट नोड से कंपेयर कर लेना। 23 ऑब्वियसली छोटा है रूट नोड के लेफ्ट साइड में। अब रूट नोड के लेफ्ट साइड में फर्स्ट पैरेंट नोड कौन सा है? 14। 14 के पीओवी में देख लेना क्योंकि 14 ऑब्वियसली प्लेस हो चुका है इसलिए, वरना अगर 14 प्लेस हो चुका है उस वजह से हम लोगों को 14 के पीओवी में देखना पड़ेगा। 14 के पीओवी से ऑब्वियसली 23 बड़ा है तो इट्स गोना बी प्लेस ऑन इट्स राइट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर इज 18। 18 वापस रूट नोड से कंपेयर करना। रूट नोड के कंपैरिजन में 38 के लेफ्ट साइड में, 38 के लेफ्ट साइड में 14 है, 14 से बड़ा है तो ऑब्वियसली उसके राइट साइड में आएगा। अब 14 के राइट साइड में पहले से 23 एग्जिस्ट करता है तो लाइकवाइज 23 के वो लेफ्ट साइड में आएगा। ओके, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक। 20 18 के राइट साइड में आना चाहिए। ओके, मैंने जहाँ से ये क्वेश्चन उठाया वो गलत है आई गेस। सो हाँ, ये जो 20 है ये 18 के इस साइड आना चाहिए। अगेन माय बैड, इट्स अ मिस्टेक। Yeah. So next 20 56. When we'll compare 56 with the root node 38, with the root node 38, वो 38 के obviously right side में आके बड़ा है। Then the next number is 45. 45 38 से कंपेयर करेंगे उसके राइट साइड में आना चाहिए। राइट साइड में बट पहले से एक पैरेंट नोड 56 एग्जिस्ट करता है तो 56 से छोटा है इसलिए लेफ्ट साइड में आएगा। क्या दिमाग की खिचड़ी है ना, लेफ्ट राइट। बट ठीक है, एक बार जब तुम लोगों को एक दो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स की मतलब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बहुत ईजी है। एंड पता सच्ची वाइवा में पूछते हैं इसलिए ये जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना इनको छोड़ना ही नहीं। डिफिकल्ट क्वेश्चन को एक वक्त का छोड़ देना कि एक्सटर्नल और हमारी जो भी वाइवा वाली मैम है उसको दया आ गई तो वो छोड़ देते हैं इजी क्वेश्चन पूछ के। एंड नेक्स्ट टर्म इज नेक्स्ट नंबर 82 एंड 70। तो 82 पहले 38 से कंपेयर कर लो, बड़ा है राइट साइड, 56 से बड़ा है उसके राइट साइड। देन कम्स विद द 70। 38 से कंपेयर कर लो राइट साइड, 56 से बड़ा है ऑब्वियसली राइट साइड। आई थिंक देयर इज वन मोर मिस्टेक, 56 से बड़ा है तो उसके राइट साइड में आना चाहिए। 82 से छोटा है तो ये जो ब्रांच है 70 वाली, इट शुड बी विद 82। सो लेट मी चेक किसी का तो सही होगा एंड आई विल गिव हर और हिज एग्जांपल।
या प्राप्ति कांचन एवरीबडी हैज सॉल्व्ड इट राइट. प्रेजेंटर ने गलत कर दिया, क्या ही बोलूँ मैं, कोई बात नहीं. ओके, सो एक्चुअली आज ना थोड़ी सी तबीयत डाउन है, दैट्स व्हाई एक दो मिस्टेक्स हो रही है. आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. बट या मैं यहीं पे वो चीज़ें क्लियर आउट कर लूँगा. यस, परफेक्ट, काफ़ी लोगों ने सही किया है. सृष्टि, सृष्टि तूने एक नोट लेने में गलती कर दी है. कि कविता, लाइक, या इसका भी सही है. राशि, यू आर ऑल्सो राइट. क्षितिज, तूने भी एक नोट खा गया भाई, 70 वाला. बाकी ठीक है. सो या इट्स इजी थिंग है ना, न्यूमेरिकल इजी है. इस चीज से आई गेस तुम्हारा वाइवा का एक क्वेश्चन निकल जाएगा. सो नेक्स्ट पॉइंट, कोड वाला भाई. सबको बहुत बोर होने वाला है इसमें, बट डोंट वरी, मैं टाइप वाइप करके ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को कोडिंग पार्ट उतना पसंद है नहीं. एंड एज सच इसके सिर्फ कुछ सिंटैक्स याद होने होते हैं, रखने होते हैं. तो मैं तुम लोगों को सिर्फ इंसर्शन सिंटैक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है. सो इट्स ईजी. तुम लोगों को पहले एक ट्री क्रिएट करना पड़ेगा एज ए मेन फंक्शन, सॉरी एज अ मेन वेरिएबल. एंड उसमें तुम लोगों को एक लूप लगाना पड़ेगा. लूप इन द सेंस वो ऐसा होता है कि हम लोगों को वैल्यू एंटर करनी होती है, राइट. अब वैल्यू एंटर करते वक्त हम लोगों को पता होना चाहिए ना, बाइनरी सर्च मतलब बीएसटी में कैसा देखते हैं कि वैल्यू बढ़ी है तो राइट में या लेफ्ट में. दैट्स व्हाई हम लोग वो लूप लगाते हैं. सो विल स्टार्ट विद द कोड, ठीक है. ट्री नोड एक वेरिएबल बनाएंगे. इंसर्ट इसका सिंटैक्स है, नॉट बैड. इंसर्ट इसका सिंटैक्स है. ट्री नोड के अंदर हम एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एंड इंट की एक वेरिएबल वापस डिक्लेयर करेंगे. एंड विल स्टार्ट विद द लूप कि इफ रूट इज इक्वल्स टू नल पॉइंटर, ठीक है, मतलब रूट की वैल्यू अगर नल है तो वो वापस रूट के नोट रूट मतलब रूट नोड पे जाएगा. ओके, एंड वहां से फिर हमारा जो बेसिकली मेन बाइनरी सर्च ट्री वहां से चालू होगा, कि रूट नोड से बाइनरी सर्च ट्री चालू होगा. अब तुम लोग कोड को ना थोड़ा समझना शुरू करो. बहुत लोग क्या कहते हैं, कोड को भी रटना चाहते हैं, बट एक बार कोड को समझना शुरू करोगे ना तो तुम लोगों को एक लॉजिक बिल्डिंग आएगी कि हम खुद भी कैसे कोड बनाए. क्योंकि कोड बनाना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, थोड़ा लॉजिकली होता है, बट उसका जो लॉजिक बिल्डिंग होता है दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है. देन हम लोगों को ऑब्वियसली अब बाइनरी सर्च ट्री बनना तो शुरू हो गया है, तो अब हम जो जो भी एलिमेंट मतलब घुसाड़ेंगे या देंगे हम लोग ऑब्वियसली ट्री को, वो प्रॉपरली जाना चाहिए कि इट शुड बी गो ऑन द राइट साइड और द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्री. तो उस चीज के लिए हम लोगों को एक सिंपल लूप लगाना है कि हमारे जो की है, द वैल्यू आई सेड यू अबाउट द की. की क्या होता है, नोड के अंदर जो जो पैकेट है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको की बोलता है. जो की वैल्यू है, अगर वो हमारी रूट की वैल्यू से छोटी है तो इट शुड बी गो ऑन लेफ्ट साइड, एज वी सी इन द बाइनरी सर्च ट्री न्यूमेरिकल. छोटा है तो लेफ्ट साइड, बड़ा है तो राइट साइड. एंड अगर वही की वैल्यू रूट की से बड़ी है तो इट शुड बी गो ऑन द राइट साइड. तो इफ की इज लेस देन रूट की वैल्यू, देन रूट लेफ्ट में जाना चाहिए एंड वहां पे जाके वो इंसर्ट हो जाएगा. ओके, सेम एज अगर की वैल्यू रूट से बड़ी है तो वो राइट साइड में जाएगा एंड वहां जाके वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है. अब ये सिंटैक्स थोड़े बहुत तुमको कोडिंग में चीजें याद रखनी पड़ती है. इट्स अ सिंपल लॉजिक एंड ये सिंटैक्सेस याद रखने पड़ेंगे कि ट्री का पॉइंटर फंक्शन एंड वेरिएबल. सेम एज ओवर हियर कि ट्री की वैल्यू, ट्री को तुमने कहाँ डाला है, रूट टू द लेफ्ट, एंड की मतलब की वैल्यू. सो एंड देन रिटर्न रूट, मतलब जब तुम्हारा ये चीज खत्म हो जाएगी तब तुमको वापस रूट पे आना है. क्योंकि जब तुम नेक्स्ट एलिमेंट पुट करते हो, जब तुमने न्यूमेरिकल में भी देखा, जब फॉर एग्जांपल उसमें 38 नंबर आया था तो तुमने 38 सॉरी 70 आया था, तो पहले 70 को 38 से कंपेयर किया था कि 38 से कहाँ पीओवी में कहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा. फिर तुमको 56 था, 56 से कंपेयर किया था कि तुमको राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा. दैट्स वाई तुमको हर लूप के बाद रिटर्न टू रूट करना जरूरी है. सो दिस इज अ सिंपल इंसर्शन सिंटैक्स फॉर अ ट्री. देन आगे बढ़ता है, ठीक है. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है. अब क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिए, ठीक है, और अभी भी डेटा स्ट्रक्चर बाकी है बोलते हैं जैसे हम लोग, तो इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर हो गए, जब उसी में तुम लोग बता रहे हो कि सारी चीजें सॉर्ट हो रही है, डेटा तुमको ऑर्गेनाइज मिल रहा है, तुम लोग वो डेटा को यूज कर रहे हो, इंसर्ट डिलीट क्या क्या ट्रैवर्सल वैवर्सल दुनिया जहाँ की चीजें कर रहे हो, तो भाई तुमको आगे की चीजें क्यों चाहिए, मतलब आगे के डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों चाहिए. क्योंकि हर डेटा स्ट्रक्चर का अपना एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है. तो इसके पहले एडवांटेजेस फटाफट पढ़ लेते हैं, क्विजेस में शायद इसके क्वेश्चंस हो. ट्री ऑफर efficient searching depending on the type of tree with average search time of O of log of n. बाइनरी सर्च ट्री का एवरेज सर्च कॉम्प्लेक्सिटी O of log of n था,
ठीक है, फॉर बैलेंस्ड ईवीएल ट्री उसका वही होता है, ठीक है। लाइक एक बार तुमने बैलेंस कर लिया तो तुमको डेप्थ कम जानी पड़ती है, तो तुम्हारा जो एवरेज सर्च टाइम हो जाता है वो O ऑफ log ऑफ n है। सो बेसिकली जो तुम्हारा ट्री है वो तुमको डेटा एक ऐसे झाड़ के फॉर्म में दे देता है, इसीलिए उसको ऑब्वियसली नाम ट्री है, कि झाड़ में चीजें ऐसा सर्च करने वाइज इजी जाती है, क्योंकि जस्ट हैव टू ट्रैवल अ वेन काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें तुम्हारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एवरेज एवरेज कंसिडर करते हैं, बेस्ट या वर्स्ट केस जिस भूल जाओ, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ log ऑफ n हो जाती है। तो तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुमको होगा इन कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग या फिर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में जो भी तुमको लगाना है, उस वक्त जब तुम ट्री फंक्शन यूज करोगे तो तुम लोग उस टाइम चेक करोगे कि तुम्हारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो अगर तुम जो कोड कर रहे हो उससे अगर log ऑफ n से O ऑफ log ऑफ n से कम है तो तुम ट्री लगाओ, ज्यादा आ रही है तो ट्री से बेटर कौन था, एरे, एरे यूज करो। Trees provide a hierarchical representation of data, making it easy to organize and navigate large amount of information. As I told you, hierarchical representation को हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर से ही करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करने में इजी जाता है, बोलेंगे। फिर लिंक्डइन और एरे क्या करता है, मैंने बताया, लिंक्डइन और एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एक लार्ज अमाउंट ऑफ तुम डेटा दोगे तो वो एक लंबी लाइन बनती जाएगी, लाइक एक लीनियर फॉर्म में। एंड लीनियर फॉर्म में कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाती है, सबको थोड़ा बहुत तो याद हो गया होगा अभी, O ऑफ n। तो तुमको O ऑफ n अच्छी लगेगी या O ऑफ log n, वो तुम यहां से समझ लो, O ऑफ log n is better than O of n. Okay, so that's why tree provides a hierarchical representation of data, making it easy to organize a large amount of information. ठीक है, एंड अब देखो ऐसी छोटे छोटे पॉइंट्स ना तुम लोग इसको हाईलाइट करके दिमाग में छाप लो कि O ऑफ log ऑफ n is better complexity than O of n. Simple. Then recursive nature of tree makes them easy to traverse and manipulate using recursive algorithm. ठीक है, ट्री में कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे इंसर्ट, डिलीट एंड ट्रैवर्स। ट्रैवर्स भी एक ऑपरेशन होता है, आई जस्ट स्किप्ड इट क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है बट उतना नहीं है, एंड वो थोड़ा ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट हो जाता है, तो आई जस्ट थॉट कि थोड़ा स्किप करना चाहिए। सो ये पॉइंट उसको रिलेटेड है। ट्रैवर्स में 3 टाइप के ट्रैवर्स होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर क्या होता है कि तुम लोग जो ट्रैवर्सिंग इज बेसिकली विजिटिंग एवरी नोड, ठीक है, विजिटिंग एवरी नोड ऑफ अ ट्री एंड जस्ट चेकिंग ओवर द डेटा एंड व्हाटएवर यू नीड, व्हाटएवर द नीड ऑफ योर कोड इज, दैट्स व्हाई ट्रैवर्सिंग होती है। अब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग क्या होती है कि तुमने लेफ्ट साइड से नोड्स को विजिट करना चालू किया, रूट नोड तक पहुंचे, फिर रिमेनिंग लेफ्ट साइड तुमने विजिट की। इन ऑर्डर क्या होता है, रूट नोड से तुमने एक एक मतलब नोड को विजिट किया एंड व्हाटएवर यू हैव टू मैनिपुलेट तुमने उस पर एल्गोरिदम लगाया। एंड पोस्ट ऑर्डर होता है, यू हैव स्टार्टेड विजिटिंग नोड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तुम एक एक नोड को विजिट करते गए एंड तुमने वहां पे एल्गोरिदम्स लगा के उसको मैनिपुलेट किया। तो दिस इज ट्रैवर्स। तो इस वजह से लाइक ये एडवांटेज इसलिए हो जाता है क्योंकि, चलो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मैंने पढ़ा था, हाँ, जो हम लोग हमारे फोल्डर्स होते हैं, ओके, फोल्डर को हम सिलेक्ट ऑल करके उसको सॉर्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज A to Z, Z to A, वो कैसे होता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रैवर्सिंग। तुमने उसको अगर कर दिया कि हाँ भाई मेरे इसको सॉर्ट कर दे कि मेरे को ये फाइल उल्टी करनी है, मेरे को पहले Z वाली फाइल पहले देखनी, A वाली फाइल लास्ट में देखनी, दैट इज अ रियल लाइफ समहाउ एग्जांपल ऑफ अ ट्रैवर्स। वो थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट भी होता है बट इट्स लाइक क्लोजली तुम लोग रिलेट कर पाओगे कि ट्रैवर्सिंग क्या है। A to Z करना है, तुमने प्री ऑर्डर लगा दिया, ठीक है, Z to A करना है, तुमने पोस्ट ऑर्डर लगा दिया, सिंपल। एनी डाउट्स गाइस? आई गेस मैं अभी तक तो थोड़ा क्लियर लैंग्वेज में ही बोल रहा हूँ, अगर किसी को कोई भी डाउट है जस्ट टेल मी, अदरवाइज डिसएडवांटेज फटाक से ले लेता हूँ। चैट बॉक्स या फिर माइक खोल के बोल दो नो डाउट या फिर व्हाटएवर। हेलो, गुड मॉर्निंग। एक एक नो डाल दो यार। ओके, नो प्रॉब्लम, आई जस्ट कैरी ऑन विद द डिसएडवांटेज। हेलो, आई एम विजिबल, मेरा आवाज आ रहा है सबको? हाँ क्या? लाइक आई रियली डोंट नो व्हाई, आई एम सॉरी अबाउट दैट। चल ठीक है, थैंक्स फॉर टेलिंग मी, मैं कंटिन्यू करता हूँ। आई एम सॉरी अबाउट दैट, आई जस्ट चेक इट आउट, आज सच्चे दिन खराब चल रहे हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज इसमें यही है कि अनबैलेंस्ड ट्री,
की जो हाइट होती है, दैट आई टोल्ड यू, अनबैलेंस्ड ट्रीज मीनिंग दैट हाइट ऑफ ट्री इज स्क्यूड. अब इसमें ना टाइप्स में जाएंगे तो ढेरों टाइप है. तो इसमें एक और दो टाइप्स होते हैं, राइट स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड. अब राइट स्क्यूड की बताता हूँ. रूट नोड हो गया, उसमें तुम्हारा पूरे ट्री के जो बचे कुचे नोड जो पूरे राइट साइड में, मतलब वन साइड बैलेंस्ड है, तो इसलिए उसको राइट स्क्यूड बोलते हैं. एंड जो रूट नोड है, सारे नोड्स, इवन हर चाइल्ड नोड, पैरेंट नोड, लीफ नोड, वो सब तुम्हारे लेफ्ट साइड में, उसको लेफ्ट स्क्यूड बोलते हैं. तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि कभी कभी डेटा ऐसा मिल जाता है कि हमें पहले ही सबसे हायर वैल्यू मिल जाती है रूट नोड, और बाकी की जितनी भी वैल्यूज है वो सब उससे छोटी होती है, तो वो सब वन साइडेड स्क्यूड बन जाती है. तो उस वक्त में ना उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है. तो उस टाइम एरे काम आता है. ऑब्वियसली फिर अगर डेटा ज्यादा होगा तो एरे भी वहां पे मात खाता है, इस वजह से सॉफ्टवेयर में बग्स एंड फीचर्स होते हैं, फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिसएडवांटेज कि अनबैलेंस्ड ट्रीज जो होता है उसको वो टाइम इनसफिशियंट होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, इसलिए एवीएल का इस्तेमाल किया था कि अनबैलेंस ट्रीज को बैलेंस किया जाए. बट स्टिल जब ऐसे अगर स्क्यूड सिचुएशन आती है तो उसको एवीएल लगा के भी वो इतने अच्छे से बैलेंस नहीं होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम होती है, पूरी कम नहीं होती. Coming to the next point, trees demand more space requirement than other data structure like arrays, linked lists, especially if tree is very large. अब भाई उसका एडवांटेज तो है कि इतना बड़ा डेटा वो स्टोर कर, मतलब इतना बड़ा डेटा वो ऑर्गेनाइज कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है. बट डेटा ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली स्पेस भी ज्यादा खाएगा. एंड हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं कि हम मिनिमम स्पेस, मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज करके हम जो भी जहाँ पे भी हमने डेटा स्टोर किया है उसको एक ऑप्टिमाइज करके उसको जगह बचाए उसमें, राइट. अब ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज तो है, बट अगर अभी डेटा ज्यादा है तो उसको ऑर्गेनाइज भी करना ही पड़ता है. तो ये बायस चीज हो गई, ये एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है ट्री का, कि वो एक डेटा बहुत ज्यादा डेटा ऑर्गेनाइज करता है बट उसको स्पेस भी ज्यादा लगती है. नो वरीज, वो उसका लुकआउट है. द इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ ट्रीज कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एल्गोरिदम. या थोड़ा सा मतलब इसकी जो कोडिंग एंड मैनिपुलेशन है वो है ज्यादा, कि तुम लोगों को लाइक लूप्स बराबर लगाने पड़ेंगे ट्री इंसर्शन के, डिलीशन के. देन तुम लोगों को कहाँ पे उसके ट्रैवर्सिंग लगानी है, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर. दैट्स वाई इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है. एज सच लिंक्डइन, सॉरी, लिंक्ड लिस्ट एंड एरेज में वो उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. दैट्स वाई इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनिपुलेशन ट्री ऑफ ट्रीज कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्गोरिदम. कोई बात नहीं, हम सब एक दिन अच्छे कोडर्स बनेंगे एंड हम लोग ट्रीज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बाकी एरेज और लिंक लिस्ट को अपन ऐसा मुट्ठी में रखेंगे. सो yes, thank you very much. This was about my presentation and I hope मैंने सबको क्लियरली मतलब बताने का ट्राई किया होगा. मैंने ज्यादा कोड ओरिएंटेड नहीं रखा क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं डेटा स्ट्रक्चर से फिलहाल नया हूँ, ठीक है. मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग का थोड़ा ज्यादा है एंड बाकी चीजों का. दैट्स वाई मेरे को थोड़ा कोड से हेजिटेशंस भी है. दैट्स वाई मैंने कोड को थोड़ा एक्सप्लेन करने में ज्यादा इनपुट रखा, ना कि मैंने डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करके उसको डीप मतलब रन वगैरह करके दिखाया. एंड मेन क्या है, कंसेप्ट तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे वाइवा में हेल्प करेगा. दैट्स वाई मैंने वो चीज की. सो या दैट वाज माय पार्ट. आई होप तुम लोगों को ट्री समझ आया होगा. नाउ कम टू द डाउट्स वाली थिंग. सो आई विल जस्ट स्टॉप माय प्रेजेंटेशन. मोहित, डाउट है किसी का, एक बार चैट बॉक्स में देख. हाँ आया ब्रो, एक सेकेंड. मैं जस्ट अ मिनट, मैं फटाक से मीट लीव करके वापस ज्वाइन करता हूँ गाइस. मुझे तुम लोगों का चैट बॉक्स में दिख रहा है, जस्ट होल्ड ऑन. जिसने डाउट डाला था यार, फिर से एक बार डाउट डाल सकते हो क्या प्लीज. आई जस्ट रीजॉइन माई मीटिंग ना, दैट्स वाई मेरे डाउट्स मतलब पूरा चैट बॉक्स क्लियर हो गया. एक बार फिर से डाउट डाल दो या फिर आराम से माइक खोल के भी बोल सकते हो. इट्स अप टू यू.
Okay, Onkar, my bad. I was mute again. पानी पी रहा था यार, sorry. So, ओनकार देखो, like mathematics पसंद है क्या? I'll just give you a simple example and सच्ची वो उसी से related है. Bracket के अंदर हम जो भी statement लेते हैं वो mathematical statement है, n log of n. O of n का ग्राफ कैसा होता है? Just imagine this is x axis and y axis. It's a straight line making an 45-degree angle with x and y. It's a straight line. तो तुमको अगर लास्ट पॉइंट पे जाना है तो तुमको पूरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 n तक जाना पड़ेगा, टाइम पूरा लगेगा. एंड लॉग ऑफ एन का कैसा है, तुम लोगों को जाना तो है एट द एंड, सारे पॉइंट कवर करते हुए जाना है, बट द स्पीड, जस्ट चेक द स्पीड. लॉग का कैसा ग्राफ होता है? इट्स लाइक अ कर्व. ओके, इट्स अ रेक्टेंगुलर, हाफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो जब तुम एक्स एक्सिस पे थोड़ा ट्रैवल, सॉरी वाई एक्सिस पे थोड़ा ट्रैवल करोगे, तुम एक्स एक्सिस पे ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो. तो लाइक समझ पा रहा है, लॉग ऑफ एन इज फास्ट ट्रैवलिंग देन एन. दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्सिटी के वाइज भी जब तुम लोग जैसे मैंने एग्जांपल इसमें दिया था ना बाइनरी सर्च ट्री में, कि तुम लोग अगर एक 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 एक, एक नोड उतरोगे तो इट बिकम्स डिफिकल्ट. बट जब लॉग ऑफ एन कैसा आएगा, जब तूने बाइनरी सर्च ट्री में देखा कि ये जो दो नोड्स है, ये दो एक किसी नोड को अटैच्ड है जहां पे मेरा ये है, और वो दो किसी और नोड पे, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ आया एंड वो यहाँ से यहाँ आया. जब उसे पता चला कि ये वैल्यू बड़ी है जो उसे चाहिए, तो वो सिर्फ यहाँ से आके इधर जाएगा, मतलब उसको कम ट्रैवल करना पड़ेगा एज कंपेयर टू ओ ऑफ एन. ओके, आई थिंक मेरा ये एक्सप्लेनेशन उतना क्लियर नहीं होगा, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकली कि लाइक ओ ऑफ एन एंड ओ लॉग ऑफ एन, लाइक थोड़ा इंटरप्रेट करने का ट्राई कर. ओके, आई थिंक मैंने उतना क्लियर नहीं किया, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट जस्ट ट्राई टू इंटरप्रेट इट. हर्ष, Hello, Mohit. हाँ, Yeah, I would like to add into that यस, log of n thing. यस हर्ष, मैं हाँ हाँ, क्यों okay, नहीं, प्लीज. okay. So I'll just show the whiteboard, I guess. ओके, Just a second. You can see my whiteboard. यू शुड, आई थिंक देखो प्रेजेंट ही कर लेना बेटर होगा, हर कोई लाइक वो लिंक में जाएगा नहीं. Okay, okay, okay. हाँ, Just a second. Yeah, otherwise let it be Harsh. Uh, for Omkar, I'll give you a simple example. Like you can consider an example where you have to perform a search operation on Okay. 1,000 elements. I Okay. think it's visible now, right? Yeah, yes, it's it's visible, but Hello, तू बोलते लाइक तू ड्रॉ वगैरह कर ले, hello. whatever you want to explain, तब तक let नीलेश finishes. Okay, huh. I think it's visible now, right? yeah. See, for log of n, let's understand it by graph. So this is an xy coordinate graph. Let's see, and let's see for O of n. So line would be like this, right? So it would be constant, like it will increase continuously like this. Just a second, sorry. It would be like this. It would be constant for every time, that is n. But however, for log function, log of n, it would be like this. I guess. Okay, huh? Yeah, So what it's happens correct. is, yeah, what happens is, yeah, you got it. I think so. But okay, I'll just explain it. That after a long run, what happens after this period, we get a constant time. So for a larger data, it would be more efficient. Okay, so that would be the explanation. Yes, perfect. Nilesh, you want to add something into it? Yeah, An I example? think that like parallel line to the x-axis, no, that wasn't O of n. I think O of n should be like at 45 degree, no? हाँ, मुझे भी वही लगा था. That's why I given the. Yeah, that was a bit wrong. So like, yeah, I was explaining you that if you consider like search, if you are performing a search operation on 1,000 elements,
So how do you go? Like if you're like finding a thousandth element in the linear search, then you go one by one till the thousandth element, right? But if you consider for the log and complexity, like you are like searching with the binary search, how do you do it? You like reduce the space by half in every search, right? So you like do it like yeah, पहले 1000 है, बाद में 500 होगा, बाद में 250, बाद में 150, ऐसे करके वो रिड्यूस होते जाएगा, राइट? सो लाइक इससे तेरा लाइक सर्चिंग स्पेस बहुत कम होता जाएगा, राइट ओंकार? So instead of thousand, you instead of searching for thousand elements and finding one element, after that, you could just reduce this space by like dividing it by just making it half. So उधर क्या होता like time complexity कम होती जाती. So like in trees also, log n क्यों बोला? Because if you're considering like पहले बहुत ज़्यादा an array was so large, then it's like half every time it's getting half. But instead of that in binary search क्या होता है like दो दो elements होते हैं and they are like by traversing from the root node you are like you can imagine it otherwise like from leaf nodes it's like just it's getting halved every at each step, so that's why it's log of n. Like you can mathematically, if I'm explaining you, O of n means O of 1000, and like if you consider it that way, and if you like go with the log n, log of 1000 it comes about like 3, no? So you can see the 3. difference, right? That's why like log n is better. You could like go with that example. Okay. Yeah, sorry, my bad. So the first line was correct. So that would be incremental. However, the log would be constant after some time. So it would be nice for larger data. And in computer science, we deal with larger data every time. Yeah. Yes. So Yeah. So yes, guys, that was my part. Thank you, Harsh and Nilesh, for covering me. मैंने थोड़ा सा whiff कर दिया था उसका आंसर देते हुए. So no worries. Let's go to the quiz. लिंक तुम्हारे चैट बॉक्स में स्पैम हो चुकी है. Just go and register yourself. फटाक से. We'll start with the quiz quickly. Short quiz है, ज़्यादा बड़ी नहीं है. बहुत easy questions भी डाले मैंने. So yeah, many of you will get the correct answer. मुझे चाहिए कि मैक्सिमम लोगों को लाइक सही से मिले आंसर्स. एज सच का ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. And yes, I want someone from the chat box to be participants to be volunteer today. Who's gonna be that? आ गए रोज के रिचुअल पे, चलो. Someone. देखो आज आज कुछ भी हो जाए मैं नहीं फंस सकता. मैं प्रेजेंटर हूँ. आज मैं खुद नहीं कर सकता क्विज के लिए स्क्रीन शेयर. Okay, so do we have? Yeah, खुद से volunteer है क्या? Otherwise, we have like default people. गाइस ऐसा थोड़ा सा ना मतलब इंटरेक्शन नहीं, थोड़ा गटफुल चीजें करो. इसमें कोई ज्यादा गट्स नहीं चाहिए. बस क्विज प्रेजेंट करना है. जो भी आंसर है दे दो, सही हो गलत. लेट्स गो Okay, मयंक. Mayank. अरे अरे स्टेप बैक, स्टेप बैक. मधुरा, will you share the screen? ये भी ठीक है. ठीक है भाई. Yeah. भूपेंद्र जोगी. Okay guys, मधुरा, are you on the meet? ये ज्वाइन कर दिया है बस. माइक खोल के या फिर फटाक से चैट बॉक्स में डाल दे. Are you able to present? Or someone else. Yes, I'm there. Okay, perfect. No Sure. problem, Just- Madhura. Yeah. I guess it's visible, right? Yes. Can we go with someone who is on the laptop?
If not, we could go with this one. नहीं नहीं प्राप्ति रोज का हो गया अभी. We'll have someone else. Only 20 join. गाइस क्विज ज्वाइन करो. इट्स अ इजी क्विज, काफी इजी क्विज है. क्विकली 69 है और सिर्फ 20 लोगों ने क्विज ज्वाइन किया. कम ऑन क्विकली. Guys, give me a hand raise for like who has joined with the laptop. I need hand raises. Not just 2 people, okay? Quickly. Okay. So yeah, we could go with Atharva Deshmukh. Could you share the screen? Or Siddesh Lamkhade. Any of you guys. Quickly, if not, then tell me if you're having any issues or something like that. कितने ज्वाइन हुए रे अभी? गाइस सोच लो. सॉरी 35 समथिंग. 40 हो गए. रोज का ही काउंट हो रहा है तो. गाइस सोच लो. इसके बाद एक और टॉपिक बचा है. फटाफट फटाक से वॉलंटियर आ जाओ. विल फिनिश इट अप. एक स्वीट टॉपिक है इसके बाद एंड देन टुडेज डे विल बी ओवर. सो तुम जितना लेट करोगे इट्स गोना बी तुम लोगों को इतना फर्क इफेक्ट होने वाला है उससे. मोहित रैंडम सिलेक्ट कर, चल जल्दी करते. चल ठीक है. हाँ Vidhi Kawase, are you on the laptop and can you share the screen? Actually, I have joined this meeting from my phone. I won't be able to share the screen right now. Yeah, okay. okay. Shrushti Chavan, can you? I need some. हाँ GDSC नहीं चाहिए था ना शायद अभी सानू को. कोई बात नहीं. Yeah, okay. Let's go with Om. Guys, go and join the quiz. And this is the last like instruction to you. गाइस क्विज की अटेंडेंस मतलब कंसीडर होने वाली है. इट्स इम्पोर्टेंट. ओके उसकी अटेंडेंस सिर्फ कंसीडर होगी, सेशन की नहीं. Both will be considered, no, guys. इतना भी सच नहीं बोलना है. अरे इजी क्विज है, मजा आएगा. Okay, then let's start. Let's start with the first question. यस. मोहित तू डिक्टेट कर ले. Okay. In a binary tree, each node have at most how many children? वैसे तो नोड्स होना चाहिए, ठीक है. या तो आके बच्चे. इजी, काफी इजी था. ट्री के अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हुए हैं. ओम ने आंसर भी दे दिया. ओम ट्राई करके आंसर थोड़ा लास्ट के 5 सेकंड्स में दे. काफी इजी था. काफी लोगों ने फिर भी 4 वगैरह किया. नो. Okay, so here comes the next question. What is the root of a tree?
रूट क्या होता है, जिससे याद करो, इट्स अ वेरी इजी थिंग. ऑप्शन पढ़ लो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये. या perfect answer, Om. So yeah, the topmost node of a topmost node without a parent, जिसका कोई parent नहीं होता, वो वहां से ही सारी चीजें शुरू होती है बेसिकली, जिससे फैमिली ट्री स्टार्ट होती है. Okay. So here it comes with the next question. So अगला क्वेश्चन है, what is the process of visiting all the nodes in a tree and returning their values called? सारे ऑप्शन पढ़ लो. डिलीशन, ट्रैवर्सल, पुशिंग, इंसर्शन. एंड या मैंने बताया इसका टॉपिक तुम लोगों को, इवन मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे. सो फोकस इट अप, इजी क्विज. या इट्स ट्रैवर्सल. मैंने 3 टाइप्स भी बताए थे, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर. एक अच्छा एग्जांपल भी था कि हम जब सॉर्ट करते ए टू जेड, जेड टू ए. या सो स्टिल वी हैव अ गुड लीडर बोर्ड. काफी लोगों ने 17-18 तक तो सब 3 पॉइंट्स वाले हैं. इजी क्वेश्चन मैंने काफी इजी डाले. अब इसमें सिर्फ टाइम का आएगा कि कौन फटाफट रीड करता है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री? ठीक है. इसका सोचो लॉजिकली. ये हो सकता है, यहाँ काफी लोगों के यहाँ मार्क्स कटने वाले हैं. So yeah, to make a tree heavier on one side to keep the tree height balanced for efficient operations, to add extra node for the redundancy. Yes, to keep the height of the balanced for efficient operations, क्योंकि हम लोगों को complexity O of log of n maintain रखनी, ना कि O of n, as we have discussed. इसलिए हम इसको AVL लगाते हैं, right? Let's go with the next question. Still leaderboard में ज्यादा हलचल नहीं है. What is the height of a tree? Very easy question. हाँ, बट स्टिल ऑप्शंस में काफी लोग इसमें थोड़ा सा विफ कर सकते हैं, तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना. द डेप्थ ऑफ द रूट नोड, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ अ पाथ फ्रॉम द रूट टू अ लीफ, द नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री. आए नहीं, वो मीम वाला ही आए हैं. परफेक्ट. द लॉन्गेस्ट, क्योंकि मुझे लग रहा था काफी लोग, एंड यस काफी लोगों ने किया भी वो, द डेप्थ ऑफ द रूट ऑफ नोड. वो नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री कैसे? चलो कोई बात नहीं, विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टिल लीडर बोर्ड काफी कांस्टेंट है. नहीं, ओम थोड़ा सा ऊपर आया है. स्टिल वो काफी लास्ट में आंसर कर रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्री? आंसर अच्छे से पढ़ो. मार्वल वाले सही से करना. ग्रूट को ट्री नहीं बोला. तुम लोगों की अटेंडेंस मैं मेरे हाथ से काटूंगा. सो या इट वाज अ रियली इजी क्वेश्चन. छोटी सी क्विज थी. ओम, ग्रूट ट्री नहीं है. नहीं है. राइट भाई. हाँ वही तो, क्वेश्चन गलत है, आउट ऑफ सिलेबस. Perfect. So that was a quiz. And alien species. सही है भाई, मेरे को तो रॉकेट पसंद है. So here is the leaderboard. ओम एक बार ओके, leaderboard visible हो जाता तो. सानू, can you dictate the leaderboard? Okay, so quiz was काफी easy. इसमें सिर्फ
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी कि जिसने फटाफट आंसर दे दिए वो जीता है. यस गाइस, तुम सब O of 1 हो. Let's go. So thank you, Nilesh. That was my presentation. That was a part of my presentation. Thank you so much. Yeah, that was a quite good session. So, guys, let's have an applause for him, everyone. I said everyone, so yeah. Okay. किसी को डाउट था इसमें कोई या फिर let's have that in chat box. Otherwise, we'll be proceeding with the next half, and it would be about DFS and BFS algorithms. I wasn't like planning on to insert this one into the DSA bootcamp, but it was actually important topic for second years and third years, mostly for second year students. So, well, let's have it by Pranav Patil itself. So yeah, Pranav, are you ready? Hello. Yeah, Pranav. Hello. Yeah, you should take over. Let's start with the session. Yes. Wait, just. Hello. Good evening, guys. Welcome to the today's last session of the DSA Bootcamp. In this session, we will be discussing about DFS and BFS algorithms. And these algorithms are very too much easy as a part of whole DSA. In uh, in this session, we will be discussing about their definition, their key concepts, their applications, and their implementation. And the last point of view, we will be taking a problem on both of them. So let us see their key concepts. So here it is a graph. What is a graph? Is a collection of nodes that connect the edges, and this is an example of graph you can see here. It's a very easy. And in previous session, and Mohit say what is a traversal means a process of visiting all nodes and printing out their values is called traversal. And connected components are the two nodes which are interconnected by edge, by their edge or vertex. That called connected components. In shorted path is the minimum path to travel between two nodes is called the shorted path. Just. So let us see DFS. What is the definition? DFS is a graph traversal algorithm which explores the nodes from the node nodes to the leaf nodes as far as possible. Means to, as the name suggests, it explores to the depth. Means at the bottom level. If we have a root node at top, if we have a root node at the top, so it will be going to the depth of the node, which is called the leaf node. So this is our root node, and this is called our the farmost leaf node. So it first it will be going to, it will be traveling to the last most, means last endmost node. That is its definition. That's our process only. Means it after going to the last node, it backtrack itself to the previous node. Means it returned to the previous node. After you also return to the previous node, and this node will be printed. Applications are there, many more applications to detect the cycles in graphs. It can be a maze solver, solving puzzles, and many more. BFS and DFS are using in very much. They have very much applications in day-to-day life. You can say our Chrome browser or any other browser, or YouTube search history, YouTube searching algorithms, and Instagram algorithms. DFS and BFS are using well. So let us see the algorithm of them. So DFS just start with the initial node, which is our root node. So it will be taking the unvisited node firstly. Means if a root node having, if a root node having its neighbor, means its children nodes, so it will be taking their taking explorer and visit nodes and current node.
So current node is our initial node, and initial node which are connected to the initial nodes, which are means they are called neighbor of there. So it will be taking their just to just first of all we will start with the initial node, and we will taking that list of unvisited nodes in that graph. So when we are starting with the initial node, we will uh, take the take the root node and their neighbors. So we will be transversing to their neighbors and to the last node, actually, as this algorithm dictates us. There, if there are unvisited node neighbors, continue to step 2 and going deeper to the graph. It will be going deeper and deeper to the graph at the bottommost nodes. And if there no unvisited node is left out, so it will be backtrack itself to the previous node and continuing the same process. Let us see this GIF. It will be DFS algorithm uses stacks, means that means the first element you have put inside it, that will be come out at last. As you can see here, this was a stack. So here it is. So as we trans as we transfer to the main node, which is initial node, is second means 2. It is our root node, and we are taking this both neighbors, and 11 will be put inside the stack, and similarly 7 will be also stored inside the stack, and and after that it will be going to the bottom of the 7, because 11 didn't have two ch child nodes. So after that, so it will be print out 7. Okay, as we have seen that after 2 there is 5 and 7. So it is going like this: 2 7. So let us see the applications of DFS. Mesh solving is a very main application of this DFS. As we are it is a backtracking algorithm. So you can see here it tracks itself backside, because of there is no because it reach out at this dent its end. So it's a backtrack itself to the back to the previous nodes, and from start it takes to the end without traversing to the other nodes actually. Similarly, topological sorting, it is also a method of sort. It is also one of the type of sorting which is done by DFS algorithm. In graph connectivity, we can detect cycles with the help of DFS. So to whether find out a graph is connected or not, we can we use DFS algorithms. So let us see the definition of BFS, breadth first search. The definition is simple. Breadth first search is simply that, like that, if we have a parent node, means a main node, and it's connected nodes, so it will be taking their values. Actually, it's done by level by level. It will be printing after and after. It's a process like that. We can see here in this graph. So let's take the S as a root node. So it is a level 0. We take level 1, level 2. So it will be printing the values by level. So first of all, it will be taking S. Will be take out the S, and after that ABC, and after all D. It's a simple process of that. At the time of implementation, BFS is easier to DFS. And application are commonly used, means they have a common application, but they differ at the time of their complexity. BFS and DFS. DFS is commonly used in minimal entry and solving puzzles, and
with, with least number of moves. So let us see BFS algorithm. It will start with an initial node, and it will be taking the the all nodes which are connected to the the current node. So 4 is our current node, and the other nodes are directly connected to the 4. So it will be also printing. It will be directly printing the connected nodes level by level. So actually, my studio is level 1, level 2, level 3. So at first it will be it is the initial node, so it will be taking 4, and after that 17, 33, and following nodes. You can see it like this. It is taking level by level. As compared to the DFS, it not transfers into the last at the end node, means at the leaf node. It is taking account of the levels, means those nodes are present on a single level and connected to the current node that are going to be printed. And this is algorithm that's only means we can say at number 4th step, continue this level by level explosion until you have visited all of the nodes at the current level. Means if our current level is 4, so automatically 4 will be printed, and after that we will be taking their lower level, means 17, 33, and following. So all of them will be visited, and after that it will be it will also switch it levels, means to the third level, bottommost level. And yes, it is not a backtracking, so it did BFS didn't go to the previous one, because it transfers from the top to the bottom. That's why there is no need of the backtracking. Application of BFS. So we can see network crawling. Network crawling simply means that whenever we search anything on a browser, on Chrome or Google, so it shows us the pages. It shows us the pages and relative the information to the to that. So that's an example of BFS only, and that is implemented by BFS algorithm only. And as a count of the recent most, means relative most example, we can say that that friend suggestion we get on the social media sites is also algorithm of, means it's a BFS algorithm, means those friends are connected to our friend. They their accounts is getting inside our suggestion. That is a BFS algorithm. To detecting the shortest path between the nodes, we use this. And graphical information system, yes, we can say this to following, means whenever we are searching, means we are traveling and we use Google Maps. So so we type our destination and our current location, so it follows the path and the relative paths to the same destination with this algorithm only. So it's a very major use of this GIS and social network analysis and network crawling also. Comparison between DFS and BFS. DFS uses stacks, as we have seen earlier. It stores the nodes inside the stack, and the nodes which are the topmost, they get first to be printed, and the last node is came out at the last, and that going to be printed. Okay. BFS uses queue because it's printing the nodes level by level. So that's why it take we, as we know, whenever we are adding any element to the queue, we add from the rear end, and we delete from the front end. Okay. So as the root node goes, and simply behind it, all the connected nodes goes side by side, and they are printing by level only. DFS can be stuck in infinite loops because it is a backtracking algorithm, so it can track itself into the loops, and it is difficult to find out the unvisited nodes in it. BFS guaranteed to terminate the finite gaps. In BFS,
there is guaranteed that each and every node will be printed, because it takes account of the nodes which are connected to the current node. Means it will be printing each and every node. In the case of DFS, it may avoid any node, or that node may be on edge or something on that side. It can avoid to print that. DFS is ideal to exploring the deep paths, and BFS is the ideal to exploring the shortest path. So the if our graph is very big and large, and our leaf node is located at the endmost node, and it is farmost, and that graph height will be maximum. That's why then we use DFS. Ideal for exploring shortest path. Yes, we can see that it is taking, it is implementing queue, and it is taking account of each and every node. So there is a possibility of finding the shortest path of each and every node. So that's why we use BFS to find the shortest path, and DFS to explore the deep paths, means long paths. It might not explore the all nodes at same common concept, yeah, that I have discussed earlier. Means in DFS there is a one disadvantage. It may avoid to print uh, particular node. Means a particular condition will be there, so it may avoid to print a particular node. That's why. And BFS will be printing each and every node. Means it doesn't avoid or mistook any node. It will be printing each and every node. DFS uses less memory space, and BFS uses more memory space. As we know that, means BFS will be printing each and every node. That's why it takes more memory, and as compared to it, DFS uses low memory, less memory. So here are the code of it. It is a C++ code. I think it will be complex to understand. Simply, I just go through it. So this is a DFS code. We taking account of stack, means we are implementing DFS with the help of stack, and we have we have already prepared the graph for it. So here we taking a void function which will be not returning any value, just conducting a process. So a vector will be initialized. A vector is a dynamic array. You should know. And a array of visited node, means those nodes are visited. That was to make sure that couldn't be printed again and again. That's why we are initializing visited nodes. So it will be taking two values, the starting node and the graph. I means which graph is that, and the starting node means initial node. So means particular will be find that from which node it will be start. So this is the operation of stack. We know that push start. Start is the initial node, means is the variable, means parameter we are passing to it. So s is the stack, means stack integer. We have initialized the integer data type stack, which is s. So we are pushing the nodes inside the stacks, and one by one they are getting stored. And when they while stack is not empty, the node is equal to stack top, means the topmost element of the stack will be printed out. And similarly it will be popped, because there is no need of the same node to be printed out again. That's why it will be popped from stack, means it get printed out. That's why no purpose to store it. That's why we popped it. And simply that there are means this code is taking one by one each and every nodes and store them inside a stack, and the topmost node are getting printed. Similarly, we can see BFS. So main operation means it's similar to BFS, but we are implementing queue inside it. So I guess guys, I by mistakenly copied the same
same code of DFS in BFS actually. My bad. So in BFS we are taking the queue only. Means at the rear end it will be letting a node one by node. It will be taking them, and from the front end it will be printing out, and parallelly it will be also be deleting the nodes from the visited array. So that's all to this trivia. We have something like this. Let us solve some example on based on graph triangles. So I will be giving you an example to solve by yourself. So we are using here BFS best breadth first search to transverse through the graph. So we are taking this way. So we will be for breadth first. I will be sharing a trick. Okay, we are taking account of levels. So this is the level 1, 2, 3, 4. In breadth first search is very easy as compared to DFS. So at the first remote at very first our initial node is 1. So 1 will be automatically get printed, and the nodes which are connected to it means those nodes which are on the second level, they all will be printed consecutively. So 1, and after that 8, 5, and 2. Means we are traveling like this. Means we are printing each and every element from this graph. Means the values of each node are going to be printed. I just share you this is yours. 7, 9, 9. It's very easy to. It's very easy as compared to DFS. So we are taking the next example from it. We have to solve this with the help of depth first search algorithm. So I am giving an idea. First out means how it will be going through. Means how it will be traveling and printing out the nodes. So this is our initial node, which is a root node, and these are the leaf nodes, the end nodes. So it will be traveling to the last means bottommost nodes. Starting from 1, it will be taking account of means first no one will be printed out, and the other levels will be stored inside a stack. 4, 2, and 3 will be stored inside a stack, and 2 will be printed because it is the topmost, and 4 will be the bottommost. That's why 2 will be printed firstly. Mm, by this we will be transversing through the bottom. We are getting this means 1, 2, 5, 9, and now it will be backtrack itself to the previous node. So the previous node of 9 is 5, so it will be taking 5. The 5 is already visited, so it will be coming the the node which is connected to 5, which is 10. Means here it will print out 10. So there are no means it read out the dead end, and there are no nodes connected to 10 other than 5, which was the previous node. So it will also again backtrack itself to the previous node, and similarly 5 also didn't have any connected node, means unvisited node. So it will again backtrack to the previous node, means which is 2, and 2 is also visited node, and this there is 6 which is unvisited and connected to 2. So it will be travel transfers to the 6 and print out 6, which was unvisited.
So as we see, 6 also didn't have any connected node, so it will also again backtrack to the previous nodes. So we are taking now 3, because one was our initial node and root node, which was already printed, means visited. So it is transversing to 3. So it will print out 3 simply. Okay, it's not a very complex, it's very simple to deal with it. Means that these algorithms are means DFS is the algorithm which backtrack itself if it doesn't find any unvisited node, means that node which is not explored. If there is no node left out, so it backtrack itself to the previous node and find out if any other nodes are unvisited or not. And at the endmost part, it will be stopped because it didn't find any node particularly. So from 3 it will also backtrack itself to the 1, and similarly 4 is connected to 1, which is a connected component to the 1. So it will be transversing to the 4, which was stored inside our stack, but just means the pointer is transversing to 4, so 4 got printed. Similarly, it will go into 7, because 7 was unvisited and was connected to the 4, and it will be going to 11 similarly. And means it is also taking account of levels, means at the first level it is starting from initial node, and second levels it is taking the 3 nodes there are. Means if 2 is printed, the other two other nodes will be stored inside stack. Means here will be 4, here will be 3. So when will it will be arrived to 3, means at that time there is no node left out above 3, so automatically 3 is the topmost node and it will be get printed. So that the reason there 3 was printed out simply there. And after 4 it store 7 and 8 to the stack, means 8 was there at bottom and 7 was at up, and 7 was current node, so 7 got printed. Similarly, it also transfers to the bottom and 11 get printed. So from 11 it backtrack itself to 7, and after that it goes to 12. 12 is unvisited node, that's why it get printed 12. So from 12 it goes to 7, and 7 from 7 again it goes to 4, and from 4 it goes to 8, and 8 is the last node, and which was unvisited, so it got printed. So this is our search, means it is a final answer, process by process. In examination or interview process, you have to mention each steps, from which steps which node it travel, and which node it got backtracked, and at which time it got printed similarly. So that's all. It was a very short topic actually. So here are some resources to prepare some theory or interview questions from this topic. And that's all, guys. If you have any doubts, you can type in chat. Hello. Yes, Pranav. So this was our last topic of DSA Bootcamp, and so now DSA Bootcamp is officially and concluded. In few minutes, you will be get reveal top 3 performers of the DSA Bootcamp. So yeah, guys, that was about the BFS and DFS algorithms, and I think Pranav has taken quietly well this session. So let's have applause for him. Yeah, it was a great session. Okay. Yeah.
for Mohit and for Pranav as well. For both of them, it was a great session today, guys. Thank you for that. So yeah, we should move on ahead with the top results, right? Top participants from the bootcamp. So we'll be declaring the results in like 2 minutes. So be patient, guys. We need to like monitor or consider today's attendance and today's responses as well. So we need few minutes, like 3 to 5 minutes we'll be needing. Until then, wait for some time. Yeah, the feedback form. उसके अलावा ये 7-8 दिन में जो भी तुम लोगों को डाउट, क्वेरी या फिर कुछ भी पूछना हो कि हमारे लाइक जो भी क्वेश्चन, एनी मिसलिनियस रैंडम क्वेश्चन, जस्ट ओपन योर माइक और चैट बॉक्स में डाल दो. कुछ भी कि मतलब नीलेश को पूछ सकते हो, डेवलपमेंट हेड है, कि उसने क्या किया, उसका टेक स्टैक क्या है, क्या सीखा है. मैंने भी कुछ कर रखा है थोड़ा थोड़ा सा, मुझे पूछ सकते हो. यहाँ पे इतने सारे डेवलपमेंट टीम के अवेलेबल है, किसी से भी कुछ भी लाइक पूछो, तुमको पक्का कोई आंसर मिलेगा, तुम्हारा क्वेश्चन खाली नहीं जाएगा. सो जस्ट ओपन अप योर माइक, मेक दिस मीट एन इंटरैक्टिव मीट. थोड़ा टाइम है, सो या जस्ट मेक यूज ऑफ इट वेरी वाइजली. Dilesh, there is a good question, like जो अभी काफी यूज होने वाला है. Would you like to answer it? Prapti has asked it in the chat box. Yeah, wait a minute, Prapti. Just a minute. Yeah, okay. I'm done with. Yeah, and I'm done. Okay, so what was the question? How should we start preparing for technical round of placements? Yeah, that's quite a good question for seniors as well. And ये अभी तक सीनियर्स भी लाइक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो भी अच्छा वे ढूंढ रहे हैं. They are also finding a good way or good approach towards the technical rounds. From my experience, I'll be saying today also, like I faced some technical HR. मेरा आज ही हुआ, एक कंपनी का था. So by experience, I'd be saying technical rounds are all about your tech stack. Like तुमने क्या क्या किया है. Mostly, I'd be saying the first important thing you should remember is तुमने resume में क्या क्या डाला है, वो सब तुम्हें आना चाहिए. By heart, by perfection, 100% guaranteed. Like yeah, तुमने अगर resume में डाले कुछ projects and it contains some tech stack about like anything, any tech stack, then you should have knowledge according to that, right? So तुम्हें पता होना चाहिए तुमने क्या डाला है. एंड किसी के भी प्रोजेक्ट्स वगैरह या गिट वगैरह करके फॉर्क करके अपने प्रोजेक्ट्स बताना, ये तो मत करना बिल्कुल भी. Otherwise there will be problem, because even if you do that, you should have the knowledge. Okay, अगर उन्होंने पूछा कि like what's this project about and तुमने क्या क्या टेक्नोलॉजीज की है, so that's why. So resume में obviously वो project डालना जो तुमने किए है. If not, then you can start right now, because you are only in second year and third year, because you have whole 1 year or 2 years, so you could start right now. Then after that, whether you have something in your resume, that's about the technology you could be asked for. Otherwise, अगर तुम like किसी position के लिए apply कर रहे हो, suppose that's if the company is product based or the service based, according to that you should prepare yourself. Mostly ना किसी भी कंपनी के रिव्यूज एंड टेक्निकल क्वेश्चंस ना सर्च करके रखना if you are going for the placements. Okay, and the technical HR obviously involves the technical expertise. So yeah, that's all about the technical rounds. You should have the knowledge about your tech stack, whatever you are preparing for. And company के suppose your like round is tomorrow itself, then yesterday क्या करना चाहिए, उस दिन क्या करना चाहिए. Don't rush anything. जो तुम्हें पता है, that's the perfect thing. Okay, बस just like 50 to 100 questions उस दिन read करना टेक्निकल राउंड के. ओके,
based on your position that you are applying for. Okay, so 100 is very good count actually. If not 50 तो ऐसे questions होने चाहिए, and not just like only theoretical or something like that. It should involve some coding questions, right? It should have questions with the codes, so that whether you're like whether the interviewer asking something related to theory, you should be willing to explain him with the coding itself. So ये कुछ अच्छा impression पढ़ने की चीज़ है. So you could go with those. And yeah, resume तो obviously अच्छा होना ही चाहिए. हमने resume building session लेना है, but let it be. देखते हैं GDSC का क्या होता है आगे. If we have any technical skills must include languages, and what else? Technical skills are not your languages actually. Technical skills, basic languages are nothing but your basics. Okay, so any company you are applying for, mostly service based companies क्या देखती है, उनकी सर्विस लाइक उनके प्रोजेक्ट अनुसार उनकी टेक्नोलॉजी बदलती रहती है. सो दैट बी नोइंग, दैट बी आस्किंग फॉर योर बेसिक्स. उनको तुम्हारे बेसिक्स पक्के चाहिए, लाइक डीएसए ऊप्स वगैरह जो है ना, any specific language, mostly in Java or CPP, and Python is also, if you're not mentioning that one. So किसी भी लैंग्वेज में डीएस एंड ओओपी परफेक्ट होना चाहिए. एनी कंसेप्ट वेदर यू आर आस्क्ड राइट नाउ और आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स, you should be clear with those, mostly OOP के concept. Okay, and after that mostly yeah, arrays and strings, those are the things which are being asked on mostly in the interviews, that are related to your languages. Okay, so regardless of that, like apart from the languages, what you have to do is your projects and your internships, where you are doing the internships in. Internships बहुत अच्छा role play करते हैं, क्योंकि because like after your introduction to any HR, they ask about your internship. So have a good internship in your hand, otherwise it would be like useless. So go for something that gives you some experience or something like that. Don't go for like अभी आ रहे होंगे ना तुम्हें कोई कोई 50 रुपीज दो या फिर 500 रुपीज दो, हम तुमको like सर्टिफिकेशन देंगे. Don't go for that. Okay, so those internships are like useless, because you won't have anything to talk about in your HRs or interviews. So yeah, that could be a differentiating point. If you want to stand out, you need to do something that's special. Okay, so you could go about the technical rounds that way. But guys, abhi to second year third year wale ho tum, so you have 1 year preparation time, 2 year preparation time. So you could start with the internships, as well as ये डीएसए एंड ओपी इतना पक्का कर लो, इसके बाद ही टेक्निकल स्टैक की तरफ जाना. अदरवाइज यूड बी लाइक उधर जाके तुम्हें बहुत सारे डाउट्स पड़ेंगे जो सॉल्व नहीं होंगे. दैट्स व्हाई. ओके, या प्लीज सेंड द गूगल लिंक अगेन. Yeah, also I forgot to send the DSA bootcamp link, I guess, no? The repository. Actually कोड सैंपल्स रेडी है, बहुत थोड़े बहुत लोगों के बचे हैं. So still I'd be sharing you right now. Okay guys, let me check if the results are ready. Yeah, I think yeah, the results are ready, I guess, and we could go with the results. Okay, with the scores after that. Yeah, okay. So guys, we'll be starting with the result announcement, and let me know if my screen is visible. Okay, so let me hear some like noise if you are interested for the results. Who are interested for the results, let me know. Yeah, let's go. I'd be showing you with the actual scores actually. Yeah, wait, no, yeah, can't show you the. Okay, so let's start the screen window and PowerPoint. Yeah guys, is my screen visible to you, everyone? Put on your mic and let me know.
This is the last part of our boot. Yeah. So let's go with the thing that forgot to mention. Yeah, we are choosing top five contestants because there had been some like thoda बहुत differences course में. So I'd be saying I needed to choose the top five. क्योंकि इतने थे लोग like that were willing to participate in the bootcamp. So yeah, let's go with the fifth position, and we have. I need to hear some clappings, okay? After the announcements for each student. So fifth student is Shantanu Chavan, and do we have Shantanu here? I think he's not there. Yeah, I got the message. Okay. Fuck. Yeah, after the fifth student, we'll be going with the fourth one, and the fourth student from the boot camp that is being in the top four is Vidhi Kawase, and she had been volunteer at some places, and she has solved the quizzes. So she's got the also quizzes, also the tasks that are being assigned in the last few days. So yeah, fourth position goes to the Vidhi Kawase. And do we have Vidhi? I think I couldn't join with the. I've shared the only screen, so I can't join with the others. Yeah. So let it be. We'll go with the third top three, and there you go. The Prapti Vargil, that's the third contestant that is in the top three from the boot camp, and she's also been consistent from the start and has asked the questions and has been volunteered. So we have chosen her. Also, with this course, proven record, we have chosen these people, not with the like only attendance or something like that. Okay, so the overall consistency matters. And do we have Prapti here? Yes, Yeah, Prapti, you got the third position. Congratulations to you. thank you. Yeah, guys, let's hear the applause for Prapti. And we'll be going with the second position here. Who do you think would be the second consistent contestant? I mean, okay. And there you go, the second contestant. That's the Amit Kumbar, and he has not been volunteered in the meetings mostly. Some of them he has been, but he had a great score at the quizzes, and also he had the task solved like correctly. And yeah, and he was present in all the meetings. So yeah, the second position goes to the Amit Kumbar. So yeah, guys, do we have Amit here? I can't see the chat box. Okay, so I need to know. Ah, yes. Yeah, Amit. So you got selected as the second in the top two. So congratulations to you. Thank you. And yeah, guys, let's have the applause for him. And let's go with the top contestant and the participants from this boot camp. This is the important one. So yeah, this goes to Shraddha Kulkarni. She has been a good candidate actually, and she has been volunteered so many times. She also had asked the doubts if she had any. She had solved the quizzes correctly. She has been consistent, and yeah, she was not the top contestant in the quizzes, but she has covered it in the other sectors. So she got the points overall.
So yeah, that was the top five contestants, and I'll be showing you the actual. Let's say, okay, I'll be showing you the scores that are being held on to the students. Yeah, those are the scores those students got, and that's how we chose the top contestants. So if you have like, yeah, I have attended the quizzes correctly and I have been volunteered. Still, I didn't get in top five. There must be something you are lacking. So that's why. So these are the top five students, and congratulations to you guys, all five people. So yeah, that was about the boot camp, and we had the top five students, and also these students going to be in the GDSC's community page and also in the other social handles quickly. Maybe by Sunday, other people, for those people who has not in the top five, don't worry guys, you will be getting these certificates, and these guys also be getting certificates, but these guys be having some other perks as I mentioned earlier. So these guys would be having the other perks to shine in the, yeah, shine in the I mean social handles. Yeah, yeah. I forgot to like congratulate Shraddha. Do we have Shraddha here? Yes. Yeah, Shraddha. Congratulations to like you have been top contestant here. Yeah. Thank you. Thank you so much. So guys, yeah, that was about the top five. And yeah, like I mentioned, you would be getting your certificates earlier, and I have only generated certificates for those students who have been consistent from the beginning and till the end. So don't worry, सबको नहीं मिलेगा obviously because you have been lacking. I've seen the attendance. It goes, आज बहुत ज्यादा आ गई. I think सानू का थोड़ा जादू हो गया आज. I mean the लीक competitive. आ गया होगा ना कि अटेंडेंस से डॉक्टर सर्टिफिकेट पे फर्क पड़ता है। हाँ, आज आज हो गया ना. सानू गया था शायद कंप्यूटर डिपार्टमेंट में आज. सो या, सबको तो नहीं मिलेगा जो कंसिस्टेंट थे तब से उनको ही मिलेगा क्योंकि इट्स नॉट एनी गेम और समथिंग लाइक दैट. इट वाज एक्चुअली क्रूशल, एंड पूरी डेवलपमेंट टीम ने लाइक दे हैड बीन पार्ट ऑफ दिस एंड दे हैड बीन वर्किंग ऑन दिस. उनको खुद भी नहीं आता था डीएसएस, स्टिल दे लर्नड फॉर यू बिकॉज आई वांटेड टू लाइक हैव देम पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट. सो पूरी डेव टीम में बहुत सारी मेहनत की थी, एंड स्टिल सम पीपल वेयर लाइक या लेट्स गो, we are not attending the meet, so those won't be getting the certificates. But other guys who have been like consistent from the beginning, don't worry, you'll be getting your certificates till the 12 p.m. of this upcoming Sunday. So yeah, that was about the boot camp guys, and let me hear some guys if you could like turn on your mic or you could just celebrate it. That's we have ended the boot camp. Kudos. And if you have Nilesh. any query until now, if you want any guidance or if you want something, anything like that, you could ask me. And yeah, cheers for the GDSC team. Yeah, obviously for Yeah. everyone. सो कोडर्स क्लब का भी जो सीएस डिपार्टमेंट है में है, उनका कोडिंग राउंड है, सो रजिस्टर कर लीजिए सब. आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी डीएसए ओप्स के कंसेप्ट के. Yeah, Harsh, do you want to say something? Yeah, I would just like to thank the entire development team and Nilesh Bhaiya for conducting such a nice event. And congratulations to all participants for successfully completing the DSA bootcamp. Also, this was a really great experience because I was able to teach two sessions here, and which really boosted my self-esteem, and that was really great. So I thank everyone for that. Thank you. Yeah, Harsh, feelings mutual. I'm such a lucky person to have development team like this, and I have participants in my team that those are like so willing and so like those people work so much harder than me actually. Those people cover for me. So yeah, guys, for development team, I give you shout out to my whole dev team. So yeah, cheering for them and some claps. Yeah, we'll be ending with this session.
This bootcamp is officially over. So yeah, guys. And Like I would like to add something, Nilesh, before ending this meet. yeah, yeah. So similarly, like Harsh said, I'm also thanking development team to give me the Great, opportunity. great. Raghav, mic or camera, This Raghav Chilwa. इसको Raghav, Raghav, I know mic सुरू है तुझा. Voice remove हाँ, कर. जी, yep, host. Just remove it, I think. Who is the Okay, host for I'll this management Sanu. team? Shubhram, sorry. Okay. So like, सर बोला ही नहीं जाएगा, वो बहुत नॉइज आ रहे हैं. ओके, सो आई वुड लाइक टू ऐड कि पता है ये सब मतलब काफी टाइम दे के पूरे डेवलपमेंट टीम ने ये इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया था. सो मैं यही बोलूंगा कि तुम थोड़ी थोड़ी चीजें अपने तरफ से सीरियस रखोगे ना, तो ये पक्का bootcamp से तुमको ना कुछ बूट कैंप नहीं, आगे भी आने वाले बहुत सारे इवेंट्स हैं. एंड हम लोग हमारे तरफ से पूरा 100% दे रहे हैं कि हर महीने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाइन अप करके रखें, जिससे हर बार बोला जाता है कि लास्ट ईयर जीडीएससी काफी डिफरेंट था इस बार से. सो इस बार जीडीएससी का जो इनपुट है ना हमारे तरफ से पूरा रहेगा. सो वी वांट कि तुम लोग भी इसमें तुम्हारा अटमोस्ट पार्टिसिपेशन दो, एंड बाकी फिर तुम हम पे छोड़ दो. हमारी तरफ से पक्का तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हें काम आएगा. सो विद दिस वर्ड्स आई वुड रियली थैंक द डेवलपमेंट टीम एंड नीलेश. मतलब नीलेश द लिटरली जो कोऑर्डिनेशन हुआ है ना इतने टाइम में, मतलब अननोइंगली कोऑर्डिनेशन था वो, कि सीरियसली द टीम वाज सो एक्टिव. सारी चीजें इतने प्रॉपर थी. सो मतलब इतनी क्रिएटिव पीपीटीज मिली एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशंस मिले. एक दूसरे से चीजें इतनी सीखने मिली, लाइक लिटरली छोटी छोटी चीजें एक दूसरे से इतनी एडअप हुई है. सो दैट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस. सो या दैट वाज इट. थैंक यू नीलेश, थैंक यू द एंटायर डेवलपमेंट टीम, थैंक यू सो मच. होय यार तुझं चालू आहे इकडं. And yeah, that's how some people are in the meet. So those won't be getting any certificates and nothing. So yeah, as Mohit has like said, whole development team has been involved here, not only me. But yeah, it was great experience for me as well to work with you all and to arrange some boot camp like this. This was a great like session. We tried to give you so much in so little time. So yeah, this could be a rush, but we had provided so much. So I think you could start with something. I've provided, or we have provided something to start with. So yeah, guys, I would be appreciated if you guys start with something. Okay, if you start with this, if you get any knowledge here, you could start with this. You would be having some like startup here. Okay, you'd be getting some something to go on. And yeah, I'd be thanking every person in the development team for this like bootcamp. And yeah, GDSC ICOER, who is this? Sanu. Yeah, preferably next onwards we'll be having official boot camps because उसमें ज़्यादा teach करने को मिलेगा. And that would be like yeah उसमें थोड़ा ज़्यादा involvement भी रहेगा सबका. And we'll be having furthermore like एक हफ्ते में तो boot camp नहीं होता, एक हफ्ते में तो DSA कभी नहीं होता, because we have invested our like 2-3 months to learn something. Something to go. So yeah guys, तुम्हें भी इससे start करना है. बस ये boot camp तो कुछ तो startup था. You could start with this, but you have to go for so long term. So yeah, और किसी को कुछ बोलना है या फिर any doubts or any queries for the GDSC or the for the dev team? Yeah, yeah. So I think no. So guys, yeah, officially we have ended the boot camp here, and have blast at the Diwali and enjoy yourself. We'll be meeting in the colleges. Yeah.
एक प्रूफ के लिए सब लोग मैं अपना कैमरा स्टार्ट करके स्क्रीनशॉट ले लेगा आई गेस। Yeah, we could do that. But I don't think कोई भी करेगा. So पार्टिसिपेशन तो बहुत ही बकवास किया है, लाइक की नहीं है इधर. There'd be some people at 10 to 12, but we need so many. So let it be. कोई नहीं. देव टीम आ गई पूरी थोड़ी. Yeah, do it guys. कैम ऑन कर लो जिनको पॉसिबल है अभी. हाँ ना. आजा आजा फटाफट खुल लो. सबसे यार फटाके फोटो है. कैमरा स्टार्ट कर लो. जीडीएससी की पेज पे जाने वाली है फोटो. तो जो पहले 9 पार्टिसिपेंट्स आ गए फ्रेम में, ऑफिशियल पेज है, देख लो. हाँ. जो पहले 9 आ गए वो पहले 9 चढ़ जाएंगे फ्रेम पे. ब्लेजर ओके. कर लो फटाफट सेटअप कर लो. जस्ट ओपन अप योर कैम्स गाइस. विनर. नाइस वन. हैंड रेज है या ऐसी, मतलब डाउट है या ऐसे हैंड रेज हो गया? ओके. और कोई फटाफट. और 2-3 लोग आ जाएंगे फ्रेम में आई गेस. या 2 लोग और. क्विकली एक फोटो है बस. सब मतलब कम्युनिटी पेज पे आ जाओगे गाइस. Yeah, let's go with the screenshot. कौन लेगा? Screenshot. Yep. Let me arrange the frame. Wait. आ जाओ सब टेक्निकल नर्ड्स. एक और फेस कैम क्विकली. जिस एक स्लॉट बाकी है, कोई भी आ जाओ. Okay, I've got. तेरा लेआउट में कितना है? 8 people. हाँ अभी 9 है. 3x3 और एक अदर्स वाला. लेआउट बड़ा देता है गेस. हाँ कौन सा लेआउट रखे रे तुम? टाइल्ड किया क्या? हाँ टाइल्ड भाई. टाइल्ड में बहुत आएंगे. नाइस. वो So तेरा अलग ही चलता है. अच्छा हाँ टाइल्ड में और बढ़ता है. नाइस. तू ही ले ले. Yeah guys, let's smile. So yeah, we could go with this. यहाँ तो दिवाली चालू हो गई मेरे अंदर. हाँ. अब तुम्हें पता है जिन्होंने मतलब कैमरा ओपन नहीं किया ना, तुम लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज खोई है. अब सब लोग पूछते हैं लिंक्डइन पे क्या डाले. तुम ये चीजें डाल सकते हो लिंक्डइन पे. सक्सेसफुली कंप्लीटेड द बूट कैंप. Let them be bro. नहीं होगा उनसे. ऐसा क्रिएटिव माइंड. जस्ट बिल्ड अप योर क्रिएटिव माइंड. इट विल हेल्प हाँ यू. जल्दी भेज. जल्दी भेज. आज ही पोस्ट करता हूँ. चल देख सानू का जादू खत्म हो गया. अभी जो थे ना पहले कंसिस्टेंट, उतने 40 ही बच्चे आ गए थे रोज की तरह. हाँ मेरा फोटो आया क्या देखो. मेरा फोटो आया क्या देखो. आया प्रेम. आ गया प्रेम आ गए. प्रेम भाई आ गए. प्रेम भाई आ गए. अरे सानू जस्ट लीड भी है. किधर है लीड? हेलो गाइस. अरे लीड रह गया यार. ऍक्च्युली मी ट्रॅव्हल करते. आता आले. फोटो नाही काढता येणार. Yeah, never mind.
So yeah, guys, अरे थँक्यू मोहित. अच्छे थे. Yeah, welcome late. So निलेश झालं डन Yeah, एव्हरीथिंग. we are done with boot camp and ओके could officially end it. ओके. मी आता बसमध्ये येता येता लाईव्ह बघत होती. ऑल वॉज गोइंग गुड. आता काहीतरी थोडंसं हॉचपॉच झालं ना लास्टला. बट इट्स ओके. ते होच राहतं. थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए बट ठीक है. तो गाइस फिर अभी सब खत्म हो गया. एक मिनट रुको. आ, तुम्हारे एंड से सब बोल दिया सबने. हेलो. Yes, 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 yes. ओके. yes. Audible. सो गाइस दिस वाज आवर बूट कैंप. इसमें ज्यादा मैं तो नहीं थी बट डेवलपमेंट टीम ने बहुत अच्छे से लाइक पूरा स्टार्टिंग से एंड तक कंट्रीब्यूट किया. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डेवलपमेंट टीम गाइस मेरे तरफ से. और चाहिए यार. एग्जीक्यूशन क्विज लेना और क्या बोलते हैं अपन टाइमिंग का एवरीथिंग अलॉन्ग मैनेजमेंट टीम जिन्होंने पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक मैनेज किया. आउट ऑफ थैंक्स ही देने आई हूँ मैं. क्या ही बोलूं अभी. ऑलमोस्ट टाइम तो खत्म हो गया है. Guys, अभी नेक्स्ट इवेंट के लिए हम डायरेक्ट ऑफलाइन ही ट्राई करेंगे. दिस वाज आवर ऑनलाइन